entire part. Then we are quickly going to have a very detailed analysis about the classification of kingdom fungi in the first class, and in the second class we are going to have a very brief introduction as well as a detailed revision on the kingdom Plantae and kingdom Animalia. So at the end of this PPT, I have included some previous year questions, NEET entrance questions. So you just stay tuned to the end of the class and participate in the question answer round and check your knowledge. ତମେ କେତେ ବୁଝିଲ କେତେ ଜାଣିଲ ସେ part details ବୁଝି ଯାଇପାରିବ. Clear? You're fine. So shall we start? Okay, let's begin the class. So the students, this is kingdom fungi, and let's start from here. The very basic introduction. So you all know, I have already discussed about this part in the previous class, that kingdom fungi is a unique kingdom of heterotrophic organisms. Yes or no? This kingdom is basically made up of eukaryotic cells. They all are multicellular organisms and they all are heterotrophic. So what do you mean by the first line, the first sentence, that they are unique kingdom of heterotrophic organisms? The word heterotrophic means they cannot produce their own food by themselves, and so that they have to depend upon others for their survival. Yes or no? This kingdom fungi, they cannot produce their own food. They have to depend upon others to for their survival. They have to depend upon others for their existence, and they cannot prepare their own food. There are two kind of organisms. One is autotroph, second is heterotroph. And fungi, kingdom fungi, they belong to heterotroph. Inside that heterotroph pilamane, different type phone achandi. Some are saprophyte, some are parasite, some are holozoic, then some are symbiotic, and fungus be majority semti sabuja part ko involve korche, include korche. But if we say majority in the part of the kingdom fungi, they are saprophyte in nature. And saprophyte mane hela kona? Now those organisms who depend upon dead and decaying matter for their survival is considered as saprophytes or saprotrophic organisms बोलते हैं हमें कहिबा. Second point कहला, they are cosmopolitan. ए word meaning अछि, they are cosmopolitan. Cosmopolitan माने हला कोन? They occurs everywhere, whether in the soil, whether in the water, whether in the air, whether in the plants, whether in the animals. So they are present everywhere. So plant review ochandi, I mean, you can see in the picture, orange rot formation is. They are present in the soil. The soil देखो mushroom जो उठी जी, but toadstool जो उठी toxic mushroom soil रे उठी जी. They are present in the air. They are present in the water. They are present in the plants and animals. Everywhere is there. That's why we call them as heterotrophy, call them as cosmopolitan, or you can say as omnipresent. Yes, obviously present ascending. But most probably ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରେ grow କରିବା ପାଇଁ କି they prefer to grow in warm and humid places. ସେମାନେ କୋଉ ଜାଗା ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? warm and humid places ରହିବା ପାଇଁ କି ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କୋଉମାନେ? ନା these heterotrophic fungus ମାନେ. Clear? ଆଉ ସେ warm and humid places କଣ ପାଇଁ କି? ନା ତାଙ୍କର life cycle କୁ continue କରିବା ପାଇଁ କି they require temperature which is in the range between 25 degrees Celsius ରୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିବ ଆଉ 35-40 degrees Celsius ଭିତରେ ଟିକେ ରହିଥିବ, ଟିକେ warm area ରହିବ. Second, humid places କଣ କହିଲା? ଯୋଉଠି moisture ଟିକେ available ଥିବ. They have mycelium, ଯୋଉ ବାଟରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ atmosphere moisture କୁ trap କରିପାରିବେ. Example ହେଇଗଲା bread ର mold, orange rods, mushroom, toadstools, etc. And you can see the white spot in the right side of the slide. White spot on the mustard leaves are due to a parasitic fungus. The brief introduction, kingdom fungi, jaha bisare ame padhuche. This chapter belongs to, this topic belongs to biological classification chapter. In the biological classification chapter, ei jo part kingdom fungi achi, five kingdom ro gote part rasibo. Inside that five kingdom, we are having kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia.
So already we have completed Kingdom Monera and Kingdom Protista, and Kingdom Fungi, the basic introduction as well as the reproduction classes has been already conducted by DHC Online Academic Support Program. Today onwards, I am going to complete this chapter by completing Kingdom Fungi, the brief classification, then Kingdom Plantae and Kingdom Animalia, a basic introduction and overview. And jaha jaha hame padhiba ethi se sabu ku neki kichi questions bana heichi jota tama already NEET entrance or previous year questions manakar asithila, and se question am practice kariya ku jiba, which will also help you enhancing your knowledge and jo NEET jo online exam tame dabo se exam pai ki eta kamare asibo. Clear? You can see some fungi are the source of antibiotics. My dear students, whenever you are studying anything, just make sure that you know you are having a brief idea about that part. Like, તમે કોઈ બી ટોપિક ଯଦି પઢୁଛ, always ask 5 questions to yourself. ଯଦି 5ଟା question ତମର clear ହେଇଯାଇଛି, then you can say, okay, I am having a brief introduction about the 5 topic. ଗୋଟେ basic knowledge ତମ ପାଖରେ ଅଛି. And the 5ଟା question କ'ଣ? What, when, where, why, and how. এই 5টা question ଯଦି ତମେ answer ଦେଇପାରିବ, then ମୁଁ କହିବି କି okay, you are having a broad knowledge about that topic. जो किंगडम फंगी अछि, why should you include kingdom fungi? ଆମେ କାହିଁକି ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା ନା ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା welfare କାମ ଅଛି, wellness କାମ ଅଛି human beings କୁ, ଯେମିତି କି some fungi are the source of antibiotics. ଏମାନେ penicillin जो ତମେ ଶୁଣିଥିଲ, first antibiotic, ଆମ जो world first antibiotic discover ହେଇଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା penicillin, school time ତମେ ପଢିଥିଲ, and it was discovered by Alexander Fleming. The scientist Alexander Fleming ଥିଲେ ସେ ୟାକୁ discover କରିଥିଲେ. It was one kind of accidental discovery. ଆଉ ସେ discovery ଟି କୋଉଠୁ ହେଇଥିଲା ନା Penicillium notatum ନାମକ ଗୋଟେ fungus ରୁ। ସେମିତି କିଛି unicellular fungus ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି କି yeast ହେଇଗଲା, they are used in making bread, making beer, ଆଉ bread ବନେଇବା ପାଇଁ ତା ନାଁ ଆମେ କହିଲେ baker's yeast, ଆଉ beer ବନେଇବା ପାଇଁ ତା ନାଁ ହେଇଗଲା brewer's yeast. Some the other fungi cause diseases in plants and animals. Again, this is also a reason to study about this fungus. Fungus ମାନ କେବଳ good କାମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ଖାଲି they are not only included in the participants. Kindly, students, kindly unmute yourself. Okay. Now, other fungi they can cause diseases in plants and animals. For example, wheat rust causing Puccinia. There is a fungus named as Puccinia graminis. ଯାହାର କାମ ହେଲା କ'ଣ, ସେ plant ରେ ଯାଇକି wheat plant ରେ Triticum aestivium wheat plant ରେ disease କରେଇ ପାରୁଛି. That is called as wheat rust causing this bacteria, जो fungus. ତ ମନେ ରଖିବାର ଜିନିଷ ଏଠି କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାର good qualities, ତାର bad qualities କୁ ପଢିବାକୁ ହେଲେ we have to classify the kingdom fungi. The fungi को different class रे subclass रे हमको divide କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେ division କରିବା ପୂର୍ବରୁ we should know what is the basis of this classification. କୋଉ basis ରେ ଆମେ ଆକୁ classify କରିଛେ, କୋଉ basis ରେ ଆମେ ଆକୁ divide କରିଛେ। Clear? So some fungi are the source of antibiotics. Some unicellular fungus yeast are used to make bread and beer, and other fungi causes diseases in plants and animals. For example, wheat rust causing Puccinia. You can see the structure of penicillium, you can see the structure of yeast, and you can also see the Puccinia growing on the wheat leaves. Clear? Any doubt? I've just started the basic introduction part. You have already studied all those things in the previous classes. I'm just recalling, just reminding you once again. So any doubt till this? So that we can proceed accordingly. No, sir. Don't have. Okay, all right. Now, most fungi are basically saprophytic in nature. Mostly they are saprophytic. And first, they are heterotroph.
Inside the heterotroph, they are saprophyte in nature. That means they absorb soluble organic matter and dead substrate, that depending upon dead and decaying organism. Few of them are parasites. Parasites ମାନ କାମ କଣ ହେଇଗଲା ନା, they depend upon a living organism. ଗୋଟେ living body ଉପରେ ସେମାନେ depend କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଠୁ derive କରୁଛନ୍ତି nutrition କୁ। Clear? living host ଉପରେ ସେ depend କରିକି ରହୁଛନ୍ତି। Third ଆସିଗଲେ କୋଉମାନେ ନା, they are called as symbionts, and symbionts ମାନେ ହେଲା କଣ, ତାକୁ mutualism ବି କହିପାରିବା। It is a interaction between two species where both of them are benefited and none of them are getting harmed। ଯେମିତି କି ଆମେ ଲାଇକେନ୍ ପଢିଛେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ, ଆମେ ଲାଇକେନ୍ ଶୁଣିଛେ ପିଲାମାନେ। ତ what is a lichen? A lichen is a symbiotic association between algae and fungi। ये जो algae और fungi आपस में मिसिकी ଗୋଟେ symbiotic association କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି the algae being the algal partner being the food partner, ये ତାକୁ food provide କରିବ। फंगस से algae को shelter provide करिवो and water absorb करिकी provide कर परिवो। algae तम जानि जे पिला माने थालोफाइटा को belong करूची। It's a thallus like structure that do not have their own leaf, own stem, own root, own flower, own fruit, तमे किछि निजर निजस्व जिंस किछि नै। The entire body is just a thallus like structure। But kingdom fungi जो अछि, ए fungi पाखरे कोन रहिला ना, fungi पाखरे group of mycelium present अछि। network of mycelium, group of mycelium present अछि। ଆଉ ସେ जो mycelium माने मिसिकी जो हाइफी माने मिसिकी जो mycelium बनै छथि, से माने atmosphere रो वाटर को absorb करि परिबे। और से वाटर absorb करि कहा को देबे, algae को देबे। एंड algae पाखरे अछि chlorophyll, ता पाखरे अछि chlorophyll पाखरे प्रेजेंट अछि कि से जो ग्रीन पिगमेंट जहा द्वारा से फोटोसिंथेसिस करके फूड बनै परिबो। The fungi is providing water and shelter to the algae, and algae is providing food to the fungi। So in this way, they are having a symbiotic association। दुहे दुहे को साहाଯ୍य करछन्ती, nobody is harming each other, and that is called as symbiotic relationship বা symbiosis बोली ताको कहि परिबा। Again, सेमति आ गुड एग्जांपल हैला mycorrhiza रे। What is mycorrhiza? Again, it is a symbiotic association between fungi and the roots of higher plants। ये जो higher plants जदि मु कहिबी जेमति कि spermatophyta, spermatophyta रे को माने आसीबे the gymnosperms। gymnosperm एग्जांपल के आसीबा cycas plant, cedrus plant বা pinus plant। ए जो plants माने जो root अछि, से रूट सहित कि जाके एसोसिएट हो जाउची ना, फंगी एसोसिएट हो जाउची। फंगस रो काम कोन ना, प्लांट को दरकार प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट whom, काहाटो प्रोटेक्शन दरकार ताको। a plant need protection from the different bacteria, different जो सॉइल रे जो बैक्टीरिया मान प्रेजेंट अच्छे सॉइल माइक्रोबायोम रे, जो माने प्लांट को जाय कि इन्फेक्शन करि परथांते, से बैक्टीरिया मान को अगेंस्ट ताको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची। Okay, Avinash, symbiotic relationship ର meaning होची पिला कोन ना, it is a kind of interaction between two species। दीटा species का भीतर interaction होची where both of them are benefited and none of them are getting harmed। सिंपल मीनिंग, दुहे दुही को बेनिफिट दउचंदी, केही काहाटो हार्म पाउ नाहंती। दीटा स्पेसीज जेबे अलगा अलगा स्पेसीज आपस में मिसिकी रहउचंदी, केही काहा को असुविधा पहुंचौ नाहंती, दुहे दुही को सहाय्य करचंदी, सेही भलिया कंडीशन को हम कहबा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और सिम्बायोसिस, और यू कैन से एज म्यूचुअलिज्म। जेमति कि algae और fungi एमन आपस में मिसिले, यू नो algae इज ऑटोट्रोफ, ये फोटोसिंथेसिस करि पारे। बट फंगी जो हे गला, फंगी इज हेटेरोट्रोफ, से फोटोसिंथेसिस करि पारे नहीं। तो एबे जेंस हला कोन, फूड कोठ आनियो फंगस ना, फंगस फूड पाउची algae टू। आ algae कोन पाउची ना, शेल्टर पाउची। algae कोन पाउची ना, वाटर पाउची, मिनरल्स पाउची। तो ए बेसिस रे कोन हेला ना, दुहे दुहे को से माने हेल्प करले, आ केही कार एक्जिस्टेंस ऊपर क्वेश्चन मार्क आनले नहीं। And this kind of structure, this kind of relationship is called as symbiotic relationship। I hope you understand। ଯଦି ବି ନ ବୁଝିପାରିଲ, you can again ask me। Okay, got it। Now, the ଯେମିତି desla lichen, you just need to remember the examples। The lichen ହେଇଗଲା an example of symbiotic association, the mycorrhiza ଗୋଟେ example ହେଇଗଲା symbiotic association। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଦିଟା କେସ୍ ରେ what is the common factor ନା, here fungi is the common factor। ଯେ lichen ରେ fungi ଅଛି, mycorrhiza ରେ fungi ଅଛି। Clear? You can see mycorrhiza can be of two types। One is ectomycorrhiza, another is endomycorrhiza। Sometimes these fungus are present inside the root।
that is called as endomycorrhiza. Sometimes they are present outside the root, that is called as ectomycorrhiza. There are different kind of parts are there. Now, if you have a basic brief part in the reproduction part, the fungus, yes, they do reproduction, and reproduction seman tinta way they karibe. One is a vegetative propagation, second is the asexual reproduction, and third is the sexual reproduction. As you all can see in the slide, they can reproduce in various ways, and the three various ways are written in your slide. जो vegetative propagation ଅଛି ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, they can do fragmentation, they can do fission, they can do budding. ତ ତମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଜି ଟ୍ରିକ୍ ଟେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଠି କି vegetative propagation ପିଲାମାନେ you can remember the name BFF. BFF, B for budding, F for fission, and F for fragmentation. Budding रे कौन आसिला ना, budding रे सेठी गोटे नुआ bud टी formation ହେଇଛି. Yes or no? ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରା କେସ୍ ରେ budding ହଉଥିଲା, ଯାକୁ ତମେ, if you ask me in Odia what it is called, then it is called as କୋରକୋଦ୍ଗମ. But yes, it is not going to help you in any means, but still budding ର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା, ଗୋଟେ bird କହିଲେ ଗୋଟେ କଢଟି, ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରା ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ bird ଟେ formation ହେଲା, ଆଉ ସେ bird ଟି ଆଗକୁ ଯାଇକି detach ହେଇଯିବ ତା parent body ରୁ, and ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଡିଲା ସେଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ହାଇଡ୍ରା ଟେ formation କରିବ. ସେମିତି ଆମର ଇଷ୍ଟ କେସ୍ ରେ ବି budding ଦେଖାଯାଇଥାଏ. ଇଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ୟୁନିସେଲୁଲାର ୟୁକ୍ୟାରିଓଟିକ ଫଙ୍ଗସ ଟି ଅଛି, ତା ବଡିରେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ଡ ଟି ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ବର୍ଡ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯେବେ ଡିଟାଚ ହଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ବଡିରୁ ଆଣ୍ଡ ନୂଆ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଠି ଅପ୍ଟିମମ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଲା ପରେ, ଫେଭରେବଲ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଲା ପରେ ସେଠି ସେ ପୁଣି ଗ୍ରୋ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଯାଉଛି. ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ବର୍ଡିଂ. ଦ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ଫିସନ. ଫିସନ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ? ଫିସନ ସିମ୍ପଲି ମିନ୍ସ ଡିଭିଜନ, ବ୍ରେକିଂ ଡାଉନ. ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କିଙ୍ଗଡମ ଫଙ୍ଗସ ଥିଲା, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାଇସିଲିୟମ ଟି ଅଛି, ସେ ବେସିକାଲି ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା into two part. ଯଦି two part divide ହଉଛି, it is called as binary fission. ତ ସେ multiple segment divide ହଉଛି, it is called as multiple fission. ତ ବେସିକାଲି ସେମାନେ fission process show କରିଥାନ୍ତି. ଆଉ ଯଦି ତମେ entrance oriented ପାଠ ପଢୁଛ, always link the topic with the previous knowledge. ଯେମିତି fission word ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଶୁଣିଛୁ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଜାଣିଛୁ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବି divide करे fission ଦ୍ୱାରା. ଯଦି ସେଲ ଦେଖିବି, ୟୁକାରିଓଟିକ ସେଲ ର ଗୋଟେ ପାୱାର ହାଉସ ଆମର ଅଛି. Who can tell me who is the powerhouse of the cell? The participant, who can tell me who is the powerhouse of the cell? ଆମ ସେଲ ର ପାୱାର ହାଉସ କିଏ? Mitochondria. ଭେରି ଗୁଡ. ଏ ଯୋଉ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ପାୱାର ହାଉସ ଅଛି, ସେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବି ଫିସନ ଦ୍ୱାରା କଣ କରିଥାଏ ନା, ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କରିଥାଏ, ଫିସନ ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ ହେଇଥାଏ. ୟେସ୍, करेक्ट आंसर श्यामी सुश्री सिमरन समस्त आंसर ठीक अछि. माइटोकॉन्ड्रिया जो अछि सी भी एक हमरा हायर सेकेंडरी स्कूल. यस, करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, जस्ट रिमेंबर इनसाइड रो लास्ट लाइन में माइटोकॉन्ड्रिया लास्ट लाइन तुम देखियो लिखा हिची, बट कोन लिखा हिची ना, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स थ्रू फिशन. फिशन मेथड रे डिवाइड हेता है, सिंपली माने भी फिशन मेथड डिवाइड हेचंदी. एंड द लास्ट पार्ट इज फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन मींस कोठु भी केमिति भी डिवाइड हेजिवो, भांगी जो गोटे फ्रैगमेंटेड टुकड़ाटे बाहरी गला. पिला माने कंफ्यूज एटु होंती कि फिशन और फ्रैगमेंटेशन बेसिक डिफरेंस कोन. फिशन भी डिटैच होची, डिवाइड होची, फ्रैगमेंटेशन डिवाइड होची. फिशन गोटे इक्वल इक्वल टाइप रे डिवाइड करबो, जेबे कि फ्रैगमेंटेशन रैंडमली डिवाइड करजो, कोठी भी को पार्ट भी. ने प्लानेरिया केस रे हिताय, एनिमल किंगडम रे तम प्लानेरिया पड़िथिबो. प्लानेरिया रे कोन होलन, तम जत्ते तो पीस रे कट करिवो, सेते से रीजनरेट करि परिबो. रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत अधिक थाए. सेमती किंगडम फंगी जो अच्छी, किंगडम फंगी रे गोटे वेजिटेटिव प्रोपागेशन शो करछि, एंड वन ऑफ द टाइप इज फ्रैगमेंटेशन. ये जो किंग फंगस गोटे पार्ट टी फ्रैगमेंटी, सी फुनी फेवरेबल कंडीशन पाइले, ऑप्टिमम कंडीशन पाइले, फुनी आउथरे ग्रो कर परियो. Clear? The vegetative propagation, just remember BFF. BFF stands for budding, fission, fragmentation. Clear? Now comes to asexual reproduction. And in the asexual reproduction, as the name suggests, here only one single parent is taking part. Yes or no? It is dita ubhay parent involved here. Nanti, a single parent is taking part here, and the single parent row without using the sexual organs emane banai deuchandi kon na nua organism ଟେ formation କରୁଛନ୍ତି. The meaning of reproduction is repeated production. That means production after production. ଗୋଟେ organism ତାରି ଭଳିଆ exactly look alike ଆଉ ଗୋଟେ organism ଟେ formation କରୁଛି. ତ ଏଠି ଏମିତି କୋନିଡିଆ ବନୁଛି, ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଓସ୍ପୋର୍ସ ବନୁଛି, ଜୁସ୍ପୋର୍ସ ବନୁଛି. You already have
have a brief introduction in the previous classes regarding this asexual reproduction. Okay, then mo kahi ki party tumko aau thore remind karochi, kahi ki party recall karochi, because today I am going to do the classification of kingdom fungus. Whenever we classify something, we always remember the basis of classification. कि को basis रे ताको हमें classify करते. Then आ पढ़ो slide रे तुम मैंने देखी परिबो. हम जो classification ना main basis कौन होची. One is the mode of mycelium. ताको mycelium केमती आची. The mode of reproduction. ना reproduction केमती करचंदी. ସେମାନେ କେମିତିଆ spores बनଉचंदी. ताको केमितिया fruiting bodies अछि. तो एई basis रे ताको हमें divide करते. On the basis of their mycelium, the mycelium केमती अछि, whether it is septate or it is accepted. Phone हमें देखो से kindly unmute yourself, the participants whose mic is on. Ramaji Higher Secondary School. Okay. Now, asexual reproduction. Vegetative or asexual basic difference कौन है? What is the basic difference between vegetative reproduction or asexual reproduction? कौन difference है? Vegetative propagation में single parent involved है, asexual reproduction में single parent involved है. But both in the cases single parent में कौन difference है? ना vegetative propagation ने the parent जो है ताको किसी नुआ जिनसे बनने को पड़ूनी. Already ता पाखे जहाँ थिला से divide कर जाओ. But in case of asexual reproduction, the single parent involve होची ଆଉ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ ଫର୍ମେସନ କରୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱିନିଡିୟମ ବନେଇଛି ଗୋଟେ ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଓସ୍ପୋର ବନେଇଛି ଗୋଟେ ଜୁ ସ୍ପୋରଟେ ବନେଇଛି different kind of spore formation କରୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ sporulation ବୋଲି କହୁଛେ something new is being done here but in vegetative propagation ଯାହା ଥିଲା ତା ପାଖେ ତାକୁ ହିଁ ସେ divide କରିଦଉଛି ଆଗକୁ and at the last the most important part that is the sexual reproduction and it is of course done by the sexual spores like the oospores like the ascospores like the basistospores ए टर्म्स रा टी मन रखिता काई ना ए टर्म्स रा आगु तम डिटेल्स देखिया को जाउछ ascospore रे कोन अछि basistospore रे कोन अछि oospore रे कोन अछि आ माने को जगह फॉर्मेशन होचंदी क्लियर तो ए टू स्टार्ट हैला आज टुडेस टॉपिक दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंगी किंगडम फंगी रा क्लासिफिकेशन हम ए पार्ट आज पढे को जाउछे I hope the my basics part are clear हैला जदि कार किसी डाउट रहला you can ask me in the chat box I can access to your comments and I am going to answer all your queries जहाँ भी अच्छे तो मते पछर पाइबा ई पार्ट any doubt पिला माने till this okay then. So based on the morphology of mycelium, based on the mode of spore formation, and based on the fruiting bodies, fungi are classified as follows. Clear? ये जो kingdom fungi है जी, हम तो classify करते हैं. Classification the main basis कौन अच्छी को basis रे divide होचंदी on the basis of morphology of mycelium. और mycelium टी केमती अच्छी. Second, the mode of spore formation. तुमने केमितिया spore formation करचंदी. Ascospore, zygospore, oospore, basidiospore, conidiospore, केमिति spore बनेचंदी. And the fruiting bodies. ये जो spore टी को fruiting body भीतर अच्छी. Ascocarp रे अच्छी, ना basidiocarp रे अच्छी, को part से present अच्छी. ये सब को यूज करिके ए बेसिस रे हम जन डिवाइड करिছে जेम तमे +2 समय से पढतो +2 फर्स्ट रे पाठ पढिथिबो देन तो तम स्कूल ले हायर सेकेंडरी स्कूल ले यू आर बीइंग क्लासिफाइड बीइंग एज साइंस स्टूडेंट आर्ट स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स again in science student persons are having biology or persons are having IT yes or no again से जो biology मान पिला रहिले ता के physics chemistry bio अछि के physics chemistry math bio अछि तो एमते different different mode रे हम तम classify कर परिबा mycelium word जो आसिला ए जो morphology of mycelium MOM ए mycelium ର meaning होजी कोन network of hyphae the group of hyphae by network of hyphae मिसले बनिबो mycelium तुम आखि आगे जो तुम देखि परछ ଗୋଟେ ब्रेड ର ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ବ୍ରେଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ଡ ରାଇଜୋପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରୋ କରିଛି ତମ जो ଜୁମ କରି ତମେ ଦେଖି ପାରିବ ବା ଭଲସେ ତମେ ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖିବ ଅବଜର୍ଭ କରିବ you can see the spider web like structure ତାପରେ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛନ୍ତି ଏ जो କଟନ ର जो ତୁଳାର जो ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଫାଇବର୍ସ ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏ जो ଆମର ସ୍ପାଇଡର ୱେବ ହେଇଗଲା ବୁଢିଆଣି ଜାଲ ଭଳି ତାପରେ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି
सेही पार्ट को हम कोन कोजे पिला माने ताको हाइफी बोली कह जाउची and group of hyphae or network of hyphae is considered as your mycelium. बुझिला? Okay. Next. Kingdom fungi को हम चारटा पार्ट रे डिवाइड करछि. One is Phycomycetes, second is Ascomycetes, third is Basidiomycetes, and the fourth one is Deuteromycetes. चारटा क्लासिफिकेशन चारटा क्लास डिवाइड करछि. मु तुमको लिविंग वर्ल्ड पढेला बेले बुझेइतले पिला माने आमे जो क्लासिफिकेशन करिथाउ तार बेसिस कोन थाए आ से क्लासिफिकेशन ना टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कोन अछि ना फर्स्ट आसीबो किंगडम तापर आसीबो फाइलम और डिवीजन then ଆସିବ class, then order, then family, then genus, and last ଆସିବ species. तो जो सातटा पार्ट रे हम डिवाइड करथले that is called as taxonomical hierarchy. The first ଆସିगला kingdom, एडी kingdom की अछि फंगस अछि. से kingdom फंगस क्लासिफिकेशन हम चारटा क्लास कोन देखुचे ना Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. So let's quickly start from the very first, that is the Phycomycetes. Phycomycetes is the basic fungi and they occur in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasites on plants. ये जो वर्ड टी तुम एटी सुनिचो आकु भलसे डिटेल से बुझो. They occur in aquatic habitats. पिले माने देखो सब बेले गोटे लिविंग वर्ल्ड जेतले स्टार्ट हेची सब बेले वाटर ही पार्ट स्टार्ट हेते. Whenever you are going from left to right, you're always moving from simple to complex or simple to advanced from coming. First, kingdom munera. Kingdom munera को माने चले all are unicellular, all are prokaryotes. जब तुम्हें kingdom munera टिका हुआ सिला तुम्हें कौन देखला kingdom protista they are unicellular but they are eukaryotes. Then kingdom fungi पड़े सिला they are eukaryotes, they are multicellular. And then asila plants पाखକୁ ସେମାନେ eukaryotic ଅଛନ୍ତି multicellular ଅଛନ୍ତି but they are able to produce their own food ନିଜ food ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି. So whenever you are moving from left to right you are always moving from simple to advanced. ଆଉ ଯେ Phycomycetes starting ରେ ଆସୁଛି ମାନେ kingdom fungi ର first ରେ ଆସେ Phycomycetes ଆଉ ଅନ୍ୟ ନା ହେଇଗଲା lower fungi ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଆଙ୍କର habitat କଣ ଏମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି they occur in aquatic habitats and ଆଉ ତା ସହିତ କୋଉଠି ରହିପାରିବେ they can occur in decaying wood. Decaying means ଯୋଉଟା ସଢୁଛି ପଚୁଛି ଯୋଉଟା ନଷ୍ଟ ହେଇ ଆସୁଛି. The decaying wood ହେଇଗଲା in moist and damp places or as obligate parasites on plant. ये जो word ଅଛି obligate से obligate ର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା permanent. ଦି ପ୍ରକାର parasite ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି one is temporary parasite ବା facultative parasite, second is obligate parasite. Facultative କି facultative ଯେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତମ ବଡି କୁ ଆସିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ mosquito ଗୋଟେ ମଶାଟେ ଆସିଲା ମତେ ବାଇଟ୍ କଲା and ପଳେଇଲା ତ ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛି ବଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟେଟିଭ ନଟ୍ ଓବ୍ଲିଗେଟ ସେ ମୋ ବଡିରେ ଲାଗିକି ରହୁନି ହେଲେ ଯୋଉ କୁର୍ମି ହେଇଗଲା ୱର୍ମ ହେଇଗଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ an obligate parasite ସାରା ଜୀବନ ପଡିକି ରହୁଛି ବଡି ଭିତରେ ଛାଡିକି ଯାଉନି କେବେ ବି ତ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଠି ଏମାନେ ଯୋଉ ହେଇଗଲେ ଲୋୟର ଫଙ୍ଗି ମାନେ Phycomycetes they depend upon the plants and they always present there as an obligate parasites. Next ए सेकंड पॉइंट मन रखियो सेकंड पॉइंट समस्त इंपोर्टेंट रहिबो आ एटा ही यूनिक पार्ट कहा पे से ना Phycomycetes विषय कौन से पार्ट टी द माइसेलियम इज एक्सेप्टेड एंड सिनोसाइटिक ए लाइन में बहुत इंपोर्टेंस अछि जो दीटा ग्रीन कलर वर्ड देखा जाउछि से दीटा ग्रीन कलर वर्ड ही मन रखियो पिला माने एई पार्ट को बिलोंग करछि आ एंटायर किंगडम फंगी रे कोठी नांती माने केवल Phycomycetes বা lower fungi को belong करते हैं से कौन कहला the mycelium is accepted and sinusitic. What do you mean by accepted? Accepted means what? The without a septum. That means there is no barrier in between the cell. is ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି structure ଦେଇଛି ଗୋଟେ hyphae structure sinusitic hyphae structure ଦେଇଛି you cannot see any kind of septum over here आ पाखरे कौनसी septum present नहीं let me annotate to this you cannot see there is no septum this is called a septum which I am drawing over here this is called a septum आको हम septum बोली कहबा आको हम cross wall बोली कहबा this is called septum or this is called as cross wall and you can never see any kind of septum over here आको जे कोन septum नहीं कोन से branching नहीं that's why they are called as sinusitic. What do you mean by sinusitic? ना sinusitic रा माने हैला This meeting is being recorded.
ठीक है, लिख लोगे तो ओके ग्रुप में, ओके चैट बॉक्स में ओके कर देना है अगर ये नोट कर लेंगे तब तक। Any problem, the students, till this? Okay. Now, you can see over here, as I am discussing, that sinusitic meaning sinusitic means having multiple nucleus. You know very well, one single cell is usually having a single nucleus. Yes or no? Or a single cell packet or a single nucleus it hai. But if in case the cell division जो होची जो mitosis होची तो दुटा part थिला. One is the cytokaryokinesis, second is the cytokinesis. If the karyokinesis is not following cytokinesis, means what? Nucleus to divide कर जाइए, but nucleus divide कर साला परे से जो हमारा cell टी divide करिया कथा cytoplasm divide करिया कथा से division टी है नहीं. In that condition, we can observe a single cell is having multiple nucleus, and exactly that condition is called as sinusitic in nature. I hope you understand. Sinusitic water meaning कौन है गला? Now one single cell is having multiple nucleus. That is called as sinusitic condition or multinucleate condition. Or multinucleate condition टी कौन पाएंगे arise करची? Because they do not have any kind of boundary between the two cells. The cells के किसी boundary नहीं और जेहेतु boundary नहीं ये टी जीटा को समान नहीं करोगे. Clear? तो ये जो हमारा किंगडम फंगी रे जो फाइकोमाइसेटिस क्लास आसीबो ता भितरे सबुट मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होजी कोन ना हियर द माइसेलियम इज एक्सेप्टेड एंड सिनोसाइटिक. And let's understand the example of this part. Our example के ही परिवे ना example is mucor, rhizopus and albugo. एटे म्यूकर भी अच्छी, एटे राइजोपस भी अच्छी, एटे अल्बिगो भी अच्छी. म्यूकर देखि पाछो तमे एठी म्यूकर माने काम कोन कले से एमती जो ब्लू कलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट अच्छी गोटे गोलिया स्ट्रक्चर ताते लंबा हाइफी गोटे लागि रहिछि बाहर पटको ताको हम म्यूकर बोली कहि परिबा. राइजोपस होछि से जे ब्रेड माने ऊपर जाके बाइंड करथे, ब्रेड मोल्ड करे थे, ब्रेड मोल्ड बोल तो कॉमनली कहै जाय. Albugo जो होची ये albugo it is a one kind of parasitic fungus and a parasitic fungus की कोड देखा जाए इन mustard leaves का occurrence भल से देखा जाता है. Clear? अब तो मन रखिया पाई गोटे ट्रिक है परियो कोन ना जो RAM करी मन रखे दबा राम करी मन रखे दबा R for rhizopus, A for albugo, M for mucor. तो फाइकोमाइसिटिस रे की अछि ना राम अछि. राम की rhizopus, albugo, mucor. Clear? एवला करी तो मन रखि परिबो. And let's go to the next part. Okay, समान केमती रिप्रोडक्शन करछन काहे कि हम जो भी पार्ट को पढु छै ता डिटेल्स पढिबो. Okay, some participants are joining very lately. I wish someone केमती कोन बुझिबे जिंस वराको. It's already 8:10. बोले माने कुछ डाउट है जाएंगे till this. अविनाश, आदित्य, आनंदिता. No, sir. Okay. अयोध्या, अर्चिता, CRG अरमान, दीपिका, एकाम्र हायर सेकेंडरी स्कूल, गीतांजलि पानीग्राही, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फुलबानी, संबलपुर MJHSS, नंदिनी, प्रभासिनी, प्रज्ञा, प्रणति, पूर्वी, रामाजी. I'm just making sure कि तमाने कुछ डाउट रहेला till this. Otherwise we'll No, continue sir. from. Okay. Now, okay, let me clear all these things. Yes. Okay, now you can see the types of reproduction in case of phycomycetes. Two kind of reproductions are there. One is asexual reproduction, second is sexual reproduction. Of course, in asexual reproduction, only single parent is involved here and no inclusion of the sex organs. But in case of sexual reproduction, here two parents takes place simultaneously. One comment positively and second denote negatively.
तो एटी जो हमर आसिला asexual reproduction ne you can see in the picture एटी को जिंस बनिछि ना एटी जू स्पोर्ट्स बनिछि एंड एप्लानोस्पोर बनिछि मन रखिबो जू स्पोर्ट्स जो वर्ड आसिला जू स्पोर्ट्स बिलोंग टू फर्स्ट yes Mr. Bunty wanna say something. The juice spores was like juice spore means they are having a flagella. They are motile in nature. Motile means they are movable. They can move from one place to another place quickly. They are called juice spores. But in case of aplanospores, they are non-motile. Non-motile means what? They cannot move from one part to one place to another place. But you can say they cannot do locomotion. They cannot change their place. They are aplanospores. Once they are released and they are attached to a substratum, ସେଇଠୁ ହିଁ ସେମାନେ favorable condition ପାଇଲେ ହିଁ grow କରିପାରିବେ and these are produced in sporangium ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି sporangium ମନେ ରଖିବ ଏଇ ପାର୍ଟ ରେ କଣ ଆସିଲା ଏଟା sporangium means organism ର ଗୋଟେ organelle ଟା ଯାହା ଭିତରେ କଣ ତିଆରି ହଉଛି spore formation ହଉଛି. If you go to the sexual reproduction part, you will see here that fusion of two gametes form a zygospore. আমি জানতে বলছি sperm and ovum fuse করিবে কোন বনଥିଲା or diploid zygote was making same the diploid zygote যেমতি বনে এটি আমি কইপা zygospores formation ହେଇଛି. And here the gametes can be isogamous, the gametes can be anisogamous, the gametes can be ogamous. This is very, very important. Note it down. Gametes are isogamous. Iso means what? Iso means same. Iso means similar. તમે કેમિસ્ટ્રી ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଛ ଆଇସୋମର ଆଇସୋବାର ଆଇସୋଟୋପ ଏ ଯୋଉ ଆଇସୋବାର ମିନିଂ ହେଇଗଲା ସେମ୍ ସେମ୍ ଆଇସୋମର ଅଫ each other glucose and fructose are isomer of each other meaning what now they both are having a common chemical formula yes they differ in the structure ତାଙ୍କ shape ରେ ତାଙ୍କ structure ରେ ତାଙ୍କ orientation differ ହେଇଥାଇପାରେ but the common chemical formula is common ରହିବ that is the C6H12O6 ठीक सेमती एठी आसिला आइसोग्यामस आइसोग्यामस माने हला कोन both the gametes जो formation ହେଇଛନ୍ତି both are of same type both are of same size ताको हम कहबा आइसोग्यामस बोली ग्यामेट्स माने एठी गैमेट जो अछन से गैमेट को नेके ग्यामस बोली कहला जदि दीटा को गैमेट सिमिलर अछन दैट इज कॉल्ड एज आइसोग्यामस जदि दीटा गैमेट्स डिसिमिलर अछन दैट इज कॉल्ड एज अनाइसोग्यामस एंड द लास्ट पार्ट कहबा ओग्यामस na pila mane oogamous is a special type of anisogamous where the female partner is larger than the male partner. Yes or no? The female partner is basically larger or bigger than the male partner and here the female partner is non-motile. सिपारी जिबा आसे कर परिबो नै male is the motile part. ये हला oogamous. आउसरे कहि दोची for last time I am telling please don't annotate please don't write anything in the screen. Just listen me carefully very important topic I am discussing ये जो gametes रहिला gametes कहले जाको तुम ओडिया रे जुग्मक बोली कहउतिला गोटे मेल गैमेट गोटे फीमेल गैमेट तो एठी हमर आसला कोन gametes तीन प्रकार हे परिबो one is the isogamous that they are similar in size similar in type and both are motile or both are non-motile depending upon the structure. Second आसला कि anisogamous where both are of dissimilar size माने मेल छोटा थिबा फीमेल बड़ा थिबा डिसिमिलर साइज आसिले बट दे बोथ आर मोटाइल दे बोथ आर मूवेबल से माने मूव करि परिबे बट द लास्ट पार्ट आसिला oogamous टाइप द मोस्ट एडवांस टाइप सो oogamous टाइप से कोन कहूची ना इन द oogamous टाइप इट इंक्लूड टू गैमेट्स one is smaller second is larger the smaller one is usually the male gamete and the larger one is usually the female gamete male is motile female is non motile clear ei janki. And then we'll quickly move to the second part that is called as the ascomycetes. Till this, I am complete kale phycomycetes. So let me remind you the basic introduction, the brief classification of phycomycetes. Phycomycetes is kaha katha mein katha houtile. Phycomycetes the other name of phycomycetes is called as lower fungi. Anka pakhre kemta mycelium thila. Now the mycelium is aseptate and sinusitic. थर्ड ए जो फाइकोमास्टिस एग्जांपल को माने तले ना RAM R फॉर राइजोपस तको ब्रेड मोल्ड बोली कहउचे देन आस्थिला म्यूकर एंड थर्ड आस्थिला कि थर्ड वन इज द M फॉर
ए रे आस्तिला अल्ब्यूगो दैट इज कॉल्ड एज अल्ब्यूगो को हम कहउतले कि एठी हमर मस्टर्ड र लीव्स रे जाई से ग्रो करथिला एज अ पैरासाइट एंड लास्ट एम फॉर म्यूकर आस्तिला এই जो ইস্ট মানে থিলে এই जो फंगस মানে থিলে फाइकोमाइसिटिस रे से মানে रिप्रोडक्शन केमति करथिले बाय टू मेथड्स वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से माने बनौथिले को स्पोर्स ना जू स्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर जू स्पोर्स पहले कोन बुच्च ना जो माने मोटाइल थिले दैट इज कॉल्ड एज जू स्पोर्स एप्लानोस्पोर्स से कोन बुच्च ना दोज आर नॉन मोटाइल इन नेचर दोज आर कॉल्ड एज एप्लानोस्पोर्स सेकंड पार्ट को असले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से माने कौन फॉर्मेशन करचंदी a different kind of gamete monogen during sexual reproduction and the different type of gametes are basically isogamous anisogamous and oogamous in isogamous both the gametes are similar type and isogamous both the gametes are of dissimilar type in oogamous it is a special kind of anisogamous where the one female is larger the male is smaller the female is non-motile the male is motile now let's quickly understand ascomycetes the number 2 classification of kingdom fungi जेमति फाइकोमाइसिटिस तमे लोयर फंगी बोली कहला द आस्कोमाइसिटिस रो माने हैला सैक फंगी जो वर्ड आस्कस अछि से आस्कस रो माने हैला सैक लाइक स्ट्रक्चर सैक बा मुणा भले देखिया पई ताको हम कहू सैक फंगी बोली कहू अगेन ये फंगस सब जानि तो किंगडम फंगी जो अछन दे ऑल आर यूकैरियोट्स दे ऑल आर मल्टीसेलुलर बट हियर कम्स वन exception and that one exception is ଆମର yeast ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସାକାରୋମାଇସିସ୍ ସେରିଭିସେ ତମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖି ଆସୁଛ yeast ର କଣ କଣ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ତମେ ଦେଖି ଆସିଥିବ ଯେମିତି ବ୍ରେଡ ତମେ ଦେଖିଛ ବ୍ରେଡ ହେଇଗଲା କେକ୍ ହେଇଗଲା ପିଜ୍ଜା ହେଇଗଲା ପେଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ବା ତୁମର ଯୋଉ ଡୋ ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ଘରେ ଯୋଉ ନାନ୍ ପାଇଁ କି बटरा ପାଇଁ जो डो फॉर्मेशन हैला बा देन इडली डोसा ए पार्ट रे भी हम ईस्ट रो हेल्प न होची तो सब प्रोसेस फर्मेंटेशन होची आ फर्मेंटेशन करिया ପାଇଁ कि हम दरकार होची बेकर्स ईस्ट और ब्रूअर्स ईस्ट बेकर्स ईस्ट की जे बेकिंग इंडस्ट्री हेल्प करूची साकारोमाइसिस सेरिविसे ब्रूअर्स ईस्ट भी से साकारोमाइसिस सेरिविसे जे ब्रूइंग इंडस्ट्री और द बेवरेजेस फॉर्मेशन अल्कोहल फॉर्मेशन हेल्प करूची तो सुनिथिबो ना अल्कोहल व्हिस्की अछि ब्रांडी अछि रम अछि arak, gin, beer, wine सब फॉर्मेशन है कहार हमें हेल्प नोचे ना किंगडम फंगस रा ईस्ट रा हेल्प नोचे साकारोमाइसिस सेरिविसे अगेन मल्टीसेलुलर एग्जांपल क्या आसीबो पेनिसिलियम नोटेटम तमे सुनिथिबा पेनिसिलियन द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 रे ही वाज अवार्डेड विथ द नोबेल प्राइज आउटा मन रखिबो ए जो क्वेश्चन मु कहूची पिला माने सेकंड ईयर रा तुम जो 12th क्लास को एंट्री करिवो 12th क्लास रा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर गोटे अछि से माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर ए पार्टी एंटीबायोटिक और 2 मार्क क्वेश्चन तमे एटी पढि परिबो सिंपल कहिबार मीनिंग होजी कोन एंट्रेंस एग्जामिनेशन से देखिबेनी केबे भी this person belongs to 11th class or 12th class or botany or zoology there is no thin line एटी किछि भी सेमने डिफरेंशिएशन है ही नहीं जो क्वेश्चन तमे पाइबो द क्वेश्चन इज इंटरलिंक से इंटरलिंक हे कि थिबो सिनोसाइटिक वर्ड तमे पढिलो कोठी किंगडम फंगी रे पढिलो एई सिनोसाइटिक वर्ड आउ कोठी आसीबो जब तुम सेकंड ईयर को जीवो फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट रो बॉटनी रो फर्स्ट चैप्टर रे आसीबो कहा कथा एंडोस्पर्म और से एंडोस्पर्म भीतर ଗୋଟେ टाइप एंडोस्पर्म अछि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हम जो पौडो पिउजे पौडो द टेंडर कोकोनट नारियल टेंडर कोकोनट से टेंडर कोकोनट जो वाटर अछि से टेंडर कोकोनट रो वाटर को हमें कहितो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म केमती बनि छंती अगेन इट इज सिनोसाइटिक इन नेचर दैट मींस अ सेल रे जो न्यूक्लियस अछि न्यूक्लियस टे डिवाइड करछि दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस but it is not following cytokinesis. So initially one cell having one nucleus to one cell having multiple nucleus. Cells से गोटी अछि nucleus multiple time divide कर जाय छी karyokinesis repeatedly हेछि हेले cytokinesis हेइ नहीं सही कंडीशन हम कहि परिबा कि one cell possessing more than one number of nucleus then that case it is called as multinucleate or sinusotic. now देखो गोटी वर्ड तुमे किंगडम फंगी रे पढिलो अगेन से किंगडम प्लांट रो आसीगला को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट रे आसीबो जे तुम जो पार्ट को पढुछ एबे 11th क्लास रे तुम काम हैला कोन ताकू लिंक करिवो सेकंड रो सहित तो एबे खाली मने रख सेट तुम लिंक करिवो ए साकारोमाइसिस आर हेल्प तुम कोड पाइबो ना एटी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर रे आज डिस्कस्ड अर्लियर
Now comes to second point of this part. Second point mycelium is branched and septate. If you remember, Phycomycetes race is a mycelium thila that was a septate and sinusitic. But here the mycelium is septate and branched. So a septate or septate difference gonna. A septate means absent of a septum. Septate means presence of a septum. The septum present, and you can say here in the septate hyphae you can see the carom dots like structure are present in between the cells, and that is called as septum. ताको septum बा ଆମେ cross wall बोली कही पारि એટલે મને बुझी लाई जाए कि do you get my point, the difference between septate and aseptate? Okay, Susri, got it. Yes, sir. Okay, got it. Now, they are saprophytic, they are decomposers, they are parasitic, they are coprophilous. A parts of basila kahalo. Okay, septum again. Okay, septum pilaman hoja. Septum is the cross wall. जे कि दीटा सेल को डिवाइड करूची मझरे गोटे बैरियर हे कि रहउची. This is called as septum. You can see here. Let me annotate for you. This is the septum. This is the septum. If I can give you an example, bus out trainer difference. Clear? Bus रे तमे गोटे एंट्रेंस रे एंट्री कलो एंड भितरे गोटे टाइप रो सीट तमे पाइबो. पुश बैक सीट अछि 2x2 पुश बैक सीट शॉर्ट रो पाइजियो. हेटी किछि कंपार्टमेंट नाही. बट इफ यू गो इनटू ट्रेन तमे देखियो कि कंपार्टमेंट अछि. स्लीपर वाला कंपार्टमेंट अलगा अछि, जनरल वाला कंपार्टमेंट अलगा अछि, एसी रो कंपार्टमेंट अलगा अछि. तो डिफरेंट कंपार्टमेंट पाइजिबो. आ से कंपार्टमेंट हेछि केमति ना मझिरे गोटे बैरियर अछि. तो एठी सेमति मझिरे गोटे बैरियर रहि गले आ से बैरियर को हम कोन कहूचे सेप्टम बोली कहूचे. और सेप्टम अच्छी बोली ये कौन करछि ना गोटे सेल को डिवाइड करी रखिछि. नाउ दिस इज वन सेल. एठु ने कि ए जाय गोटिए सेल एंड ए गोटिए सेल भीतर गोटिए न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि. क्लियर? सेमति ये गोटे सिंगल सेल हे गला एंड एठु ए जाय जो सेल रहिला सिंगल सेल ले गोटे सिंगल न्यूक्लियस फॉर्मेशन अछि. देन दिस इज कॉल्ड सेप्टम. अब सेप्टम दर से कोना ब्रांचिंग हे जे डिवाइड हे जे गोटे ब्रांच सेकंड ब्रांच थर्ड ब्रांच प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रांच को फॉर्मेशन हे जे. Accepted case रे there is no branching. Clear? Those persons are living in hostel. जो मैंने हॉस्टल रे रहउथिबो समान जानिथिबो कि तमरो किचन भी सेही तमर रूम, तुमरो स्टडी रूम भी सेही तमर रूम, तमर बेडरूम भी सेही तमर रूम, तमर गेस्ट रूम भी सेही रूम. वो गेस्ट तम रूम को जदि आसी संग माने आसीले तमर बेड ऊपर जाई बसचंदी सेठी किछि डिवीजन नाही, पार्टीशन नाही. गोटिए सिंगल रूम को तम सेठी पूजा रूम भी कर परियो, सेठी पाठ पढ़ा रूम भी कर परियो, तम सेठी सब रूम कर परियो ताको नेकी यूज कर परियो. So that is called as accepted condition. I hope you understand. And last point, they are saprophytic, they are decomposers, they are parasitic or coprophilous. Saprophytic means what? They depend upon dead and decaying organisms. Decomposers means what? जो मैंने decompose करुछन्दी गोटे complex molecule को भांगी की ताको simplified part रे convert करुछन्दी. Decompose. Composition means मिसिबा. Decompose माने भांगीबा, breakdown होबा. अब breakdown ने के help करुछन्दी? Fungus माने help करुछन्दी. And last one is parasitic or the word असला coprophilous. कॉप्रोफिलस रो माने हैला ग्रोइंग ऑन डंग. डंग कहले गोबर. जो कैटल रो जो एक्सक्रीटा थाए तो गोबर बोली कहा जाए. से जो गोबर हे गला डंग हे गला काउ डंग जाको हम कहउचे ता पर से माने ग्रो करछन्दी एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉप्रोफिलस. और से माने कहा को बिलोंग करछन्दी को पार्ट को बिलोंग करछन्दी एस्कोमाइसेटिस को बिलोंग करछन्दी. नाउ इफ यू मूव टू द reproduction part, in ascomycetes they can reproduce by conidia, and conidia is a plural form, conidium is a singular form. By conidia these are produced exogenously on the special mycelium called as conidiophores. तांको भाई किछ स्पेशल माइसिलियम कोनिडियोफोर प्रेजेंट अछि जहा ऊपर कोन बनुछि कोनिडिया माने फॉर्मेशन होइछनि बाहर पटु बाहर कि रहिछनि एंड दिस कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसिलियम. ये सुन ये जो कोनिडिया हे गला कोनिडिया की गोटे ना गोटे स्पोर टी एंड स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन मिलिबो से ग्रो करिवा स्टार्ट करिवो आ जब से ग्रो करिवा स्टार्ट करिवो से तो बहुत सारा हाइफी बनेइबो एंड ए नेटवर्क ऑफ हाइफी ए ग्रुप ऑफ हाइफी आपस में मिसले कौन बनै देबे से हाइफी मिसिकले बनै देबो गोटे माइसिलियम के. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन है ना सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होइछि सेठी तारी बॉडी रो एक्सोजिनसली बाहर पटे गोटे स्पेशल माइसिलियम भीतर थिला कोनिडियोफोर्स और सेठ से बनै दिछि कोनिडियम बा कोनिडिया एंड से कोनिडिया जब जर्मिनेट करिवे माने ग्रो करिवे माने प्रोड्यूस कर देबे माइसिलियम एंड आको रिप्रोडक्शन हे गला गोटे पार्ट रो गोटे पार्ट कन्वर्ट हे गले.
Then a ascomycetes sexual reproduction केम करछंती of course by using ascospores ए वर्ड हम यूज करथिले स्टार्टिंग रो ascomycetes रो ascospore आ से ascospore टी काहा भितरे बनिछि ना एंडोजिनसली सेटी कोन थिला एक्सोजिनसली आ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टी बाहर पटे होतिला एक्सोजिनसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टी को डेवलप करछि एंडोजिनसली माने इनसाइड रो डेवलप करछि आ sac like structure that is called as asci the singular is called ascus the plural is called asci then the nucleus nuclei so the ascus asci और जो asci है they are arranged to form ascocarp what is the fruiting body ascocarp is the fruiting body ये ascocarp भितरे माने grow करछंती now remember ये जो हमें फर्स्ट देखले क्लासिफिकेशन जो पार्ट देखितले क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट मोड थिला तार केमितिया माइसिलियम हेतिबो हाउ व्हिच काइंड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन केमिति स्पोर बनउचंदी देन फ्रूटिंग बॉडी केमितिया हेतिबो तो एटी मन रखिबो जे आस्कोमाइसिटिस रे आसीबो ता फ्रूटिंग बॉडी रो ना कोन आस्कोकार्प आउ से जो तार केमितिया स्पोर्ट्स बनुची ना आस्कोस्पोर्ट्स आगो माइसिलियम केमितिया अछि ना सेप्टेट सेप्टेटर माने कोन यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट ना दे आर यूनिन्यूक्लिएट ये ताको सेप्टम अछि तो यूनिन्यूक्लिएट सिंगल सेल सिंगल न्यूक्लियस रहइबो तो दीज आर द थिंग यू नीड टू रिमेंबर दीज आर कॉल्ड आस्कोकार्प और आस्कोकार्प भीतर को माने अछंती ना आस्कोकार्प भीतर अछंती आस्कोस माने अछंती आ से जो आस्कोस माने मिसी के आस्कोस्पोर्ट्स फॉर्मेशन करछंती जोटा कि हाप्लोइडिक नेचर एट गोटे वर्ड लिखा जे डाइकैरोटिक हाइफी ए जो डाइकैरोटिक हाइफी रो माने हला कोन तुमको रिप्रोडक्शन क्लास रे आरआईडी सर ऑलरेडी पढ़ाई चंदी डाइकैरोटिक फेज रो माने हे गला कोन पिला माने जोठी दीटा को न्यूक्लियस आपस रे मिसी चंदी हेले कंप्लीटली अटैच हे नांदी n+n फॉर्मेट रे रह चंदी और बेसिकली कौन हुए ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनटा पार्ट थिला तीनटा पार्ट कौन थिला ना फर्स्ट वन इज द प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन सेकंड इज द साइट हमर कारियोगैमी आगो हैला हमर प्लाज्मोगैमी देन कारियोगैमी देन मेयोसिस प्लाज्मोगैमी रे की हितला जेटा प्रोटोप्लाज्म माने आपस में फ्यूज करथिले टू डिफरेंट हाइफी द प्रोटोप्लाज्म माने आसे फ्यूज करथिले दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी सेकंड रे कोन हितला तांकर जो न्यूक्लियस टी थिला कारियोगैमी से फ्यूज करथिले इमीडिएटली एंड थर्ड थिला मेयोसिस जब दीटा न्यूक्लियस फ्यूज करिवे न्यूक्लियस फ्यूज कला पर कोन फॉर्मेशन करिवो ना डिप्लॉइड स्ट्रक्चर टी बनिवो आ डिप्लॉइड रो हैप्लॉइड बनिया पई कि नेचर पाखरे गोटे ही रास्ता अछि ता ना होची कोन ता ना होची हमरो मेयोसिस बाय रिडक्शनल सेल डिविजन ଏବେ କଥା ହେଇଛି କଣ ସବୁ କେସ ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ इन द सेंस कि इमिडिएटली प्लाज्मोगामी ହେଲା ପରେ इमिडिएटली कारियोगामी ହେଇ नथाय तो once प्लाज्मोगामी ହେଇ गला they will take time they will take time and they'll remain attached together but not together माने not exactly in the like 2n condition so माने n+n condition ହେଇକି ରହିବେ ମାନେ ଦିଟା प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करी गले हेले ए प्रोटोप्लाज्म रो न्यूक्लियस ए प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस टी आपस में फ्यूज करी नहंती ता सेल गोटिए हे गला चैम्बर गोटिए हे गला बट स्टिल एटी ये भी n अछि हैप्लॉइड ये भी n अछि हैप्लॉइड एंड माने n+n हे के रहिछथि 2n हे नांती this particular phase is called as dikaryophase di means two karyo means carrion और dikaryophase से प्रेजेंट हे अछन तो डाइकैरोटिक बा डाइकैरियोफेज बोली कहि परिबा हम बुझ पाइलो आ माने को माने शो करन डाइकैरियोफेज ना आस्कोमाइसेटिस एंड बेसिडोमाइसेटिस माने शो करथान आउ कहि नै ए दि जण शो करन आस्कोमाइसेटिस बेसिडोमाइसेटिस आको हम डाइकैरियोफेज बोली कहउछे ओके तब आसला तर एग्जांपल्स आसला एग्जांपल्स के आसला ना एस्परजिलस क्लाविसेप्स न्यूरोस्पोरा और जो न्यूरोस्पोरा को हम यूज करछे बेसिकली इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क रे एंड मोरेल्स एंड ट्रफल्स ओचन दे आर द एडिबल एंड आर डेलिकेसीज रूप तक हम यूज करछे जो मोरेल्स ट्रफल्स दे आर एडिबल फंगस एडिबल माने जे खाइबा योग्य जाको हम खाइ के हजम करि परिबा दीज आर एडिबल which can be eaten that is called edible example तो आर कोन ट्रिक फोन मन रख परिबा देखो एडी एस्परजिलस अछि क्लाविसेप्स अछि न्यूरोस्पोरा अछि मोरेल्स अछि ट्रफल्स अछि ये ट्रफल्स रो आ गोटे अन्य ना हे गेला बैफेल्स ट्रफल्स को मैं बैफेल्स बोली भी कहि परिबा BAFFLES बैफेल्स बोली कहि परिबा जे एट गोटे ट्रिकी गोटे पार्ट आसीबो टिके कॉमेडी टाइप रो जिंस आसीबो त मन जरे भल से सुनिबो बुझी परिबो तो मुआ को केमते डिवाइड करछि कोन ना मो बुफालो पेंसिल नेई क्लास आसीछि रिपीटिंग once again mo
बुफालो पेंसिल नहीं क्लास आसीची अरे बुफालो केबेटू पेंसिल आलेनी बुफालो के मोइसी मोइसी केबेटू क्लास आसिलेनी क्लास भी आसी पेंसिल भी आनीची ना यस सर कहले कोन मो बुफालो पेंसिल नहीं क्लास आसीची ये जो मो आसिला दैट मो मींस मोरेल्स मो हैला मोरेल्स बुफालो मन देखो बैफेल्स बैफेल्स हैला कि हम ट्रफेल्स ना बैफेल्स तो मो बुफालो हेगला मोरेल्स एंड ट्रफेल्स जेटा को मो बुफालो मोरेल्स एंड बैफेल्स और ट्रफेल्स पेंसिल पेंसिल मन दो पेनिसिलियम पेनिसिलियम कहार पार्ट ना एस्कोमाइसिटिस रो पार्ट तो मो बुफालो पेंसिल पेंसिल हेगला पेनिसिलियम नेई नेई की माने कोन नेई की हेला न्यूरोस्पोरा नेइरो न्यूरोस्पोरा देन तब आसला क्लास क्लास हेगला क्लाविसेप्स क्लास रो मन रखिबो क्लाविसेप्स क्लास क्लारो क्लाविसेप्स एंड आसिछि आस्रो एस्परजिलस तो जो आस्कोमाइसिटिस रे जो एग्जांपल टिक अछि तो केमिते मन रखिबी ता पई गोटे फनी ट्रिक हो जेया कि मो बफालो पेंसिल ने क्लास आसिछि जोटी मो हे गला मोरेल्स आ बफालो हे गला ट्रफेल्स पेंसिल लो पेनिसिलियम क्लास हे गला हमर क्लाविसेप्स आस आ ने की हे गला न्यूरोस्पोरा आ आसिछि माने हे गला एस्परजिलस तो सब जगह एग्जांपल मन रखिदेला फर्स्ट की आस्तिला फाइकोमाइसिटिस फाइकोमाइसिटिस का कथा मन रखिदेले राम आर ए एम राम आर रहेगला राइजोपस ए रहेगला अल्ब्यूगो एम रहेगला म्यूकर तो फाइकोमाइसिटिस तीनटा एग्जांपल आर ए एम क्लियर देन आस्कोमाइसिटिस आसीगला कोन मो बुफालो पेंसिल नहीं क्लास आसीची मोरेल्स ट्रफेल्स देन पेनिसिलियम देन न्यूरोस्पोरा देन क्लाविसेप्स देन एस्परजिलस एति कथा मन रखियो क्लियर डन एबे देखिबा कि जो न्यूरोस्पोरा रो काम कोन ये क्लाविसेप्स रो काम कोन ये एस्परजिलस रो काम कोन ए माने कोठी होजंती पिला माने न्यूरोस्पोरा जो अछि आ नारे न्यूरो अछि ना न्यूरो आपको मैं यूज कर जे कोठी ना जेनेटिक वर्क रे बायोकेमिकल वर्क जो लैबोरेटरी माने कर जो काम करा हुए जेमती साइंटिस्ट मेंडल जे थिले मेंडल कर मेन ऑर्गेनिज्म के थिला पी प्लांट पाइसम सटाइवम तुम सब जानि छ मेंडल कहा पर रिसर्च करथिले ग्रेगर जोहान मेंडल द फादर ऑफ जेनेटिक्स ताकर बेसिकली काम कहा पर थिला ताकर काम थिला रिगार्डिंग द what Pisum sativum plant सब जोड़े साइंटिस्ट थे थॉमस हंट मॉर्गन टीएच मॉर्गन ताकर काम थला कहा परे ताकर काम ना ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर ऊपर सिम्पली न्यूरोस्पोरा को भी हम यूज करि परछे कोठी ना बायोकेमिकल वर्क रे जेनेटिक वर्क ताको हम यूज करि परछे जो क्लाविसेप्स आसिला क्लाविसेप्स रे आसिला कि आर स्पेसिस আছে क्लाविसेप्स पुरपुरियस बा क्लाविसेप्स पुरपुरिया एक को हम यूज करछे एरगट फंगस बोली कहै छै मन रखिबा क्लाविसेप्स इज आल्सो कॉल्ड एज एरगट फंगस क्लाविसेप्स अन्ना कोन हे गेला एरगट फंगस ए क्लाविसेप्स जो नै कि आको हम एरगट फंगस कहबा एरगट ई आर जी ओ टी आना हे गेला एरगट फंगस आको हम यूज करछे कोथरे एलएसडी एलएसडी इज अ काइंड ऑफ ड्रग्स ड्रग्स सुनछ कोकेन हेरोइन गांजा अफीम चरस सेटोड आसला ड्रग्स तनाला एरगट जो एलएसडी डेलिकेसी मींस जब हम फूड यूज करछे डिलीशियस फूड कोइ परते डेलिकेसी से तक हम यूज कोइ परछे ताको एलएसडी बोली कहै जिवो लाइसर्जिक डाइसोर्बेंट एंड आर यूज ला गोटे ड्रग्स लेस माने यूज होतन क्लाविसेप्स एरगट फंगस और जो एस्परजिलस अछि एस्परजिलस नाइजर ये एस्परजिलस जो गोटे पैरासाइटिक फंगस ये जाकी इन्फेक्शन क्रिएट करे थे बॉडी रे एस्परजिलस ए पार्ट मन रखियो क्लियर so these are the examples of ascomycetes. Okay, the next part is basidomycetes. Third part is basidomycetes. After the mushrooms, then bracket fungi, puff balls. तुम देखी पार तो different kind of mushroom और different mushroom जो mushroom का मैं खाऊ चे agaricus था ना जो mushroom button mushroom जो खाऊ चा पाड़ा छोटे जो खाऊ चा ता ना है गला कना agaricus bisporus ता ना होची agaricus bisporus scientific name. Then the mango scientific name is Mangifera indica. सेमती मशरूम रो साइंटिफिक नेम है गला कना agaricus bisporus जब हमें खाऊ चे it includes mushrooms it includes bracket fungi or that is called as puff balls बोले कहि परिबा now you can see over here they grow in soil they grow in logs and tree stumps and in living plant bodies as parasite
एटी aquatic word कोटी लिखा है कि पिला माने जदि मन पकई पारिबा फाइकोमाइसिटिस पढिला बेले कहितली फाइकोमाइसिटिस माने कोड देखा जानती एक्वेटिक हैबिटेट देखा जानती जेहेतु से माने स्टार्टिंग कले दे आर द पायोनियर दे आर द लोयर फंगी तांका स्टार्टिंग हेतिला वाटर दे आर एक्वेटिक फंगस बट ए माने एक्वेटिक फंगस नहंती ए माने डायरेक्टली सॉइल रे ग्रो करिवे नले वुड लॉग माने काठ गंडी जो हे गेला वुड लॉग रे ग्रो करिवे नले ट्री स्टम्प हे गेले गोटे गछटी मरि जाईची तार बिका डाल पार्ट आम भांगी देजे केवल द रूट पार्ट टा बचे दैट इज कॉल्ड एज द ट्री स्टम्प पार्ट टा बचे otherwise in the living plant bodies as parasite the rust bane hala smudge formation hala man banai paribe and again the mycelium is branched and septate you just need to remember this segment that in case of phycomycetes the mycelium is aseptate and sinusitic and in rest 3 like the ascomycetes basidiomycetes and deuteromycetes the mycelium is branched and septate એટલે મને kindly follow NCERT book NCERT biology book जो अच्छी फर्स्ट ईयर रा तो मार्क करि परिबो फाइकोमाइसिटिस रो सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन में लिखि देछि कि द माइसिलम इज एक्सेप्टेड एंड सिनोसाइटिक बट रेस्ट तीनटा जो देखिबो दैट इज द फाइकोमाइसिटिस देन तापर जो आस्कोमाइसिटिस बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटरोमाइसिटिस सबुठी पाइबो गुटे वर्ड कि माइसिलम इज ब्रांच एंड सेप्टेड ब्रांच एंड सेप्टेड माने कोन अविनाश मन पड़ुची ब्रांच एंड सेप्टेम तुम 50 सेप्टेम्बर माने कोन तांको बे कोन रहिला सेप्टम प्रेजेंट अछि अविनाश आदित्य शुभम शुभ्रांशु सुश्री शुभम परिडा एकाम्र हायर सेकेंडरी स्कूल रामाजी हायर सेकेंडरी स्कूल विष्णुगिरी सौम्यश्री मिश्र स्मृति सिंह स्मृति रेखा साहू बुझपरछ सेप्टेट माने कोन माइसिलम रे काम कोन माइसिलम केमति थांती कोन काम करंती dear participants any doubt till this No, sir. okay okay got it now how they reproduce the asexual spores are generally not found but the vegetable reproduction by fragmentation is common man asexual reproduction करंती नै अंकर reproduction भी हिता vegetative reproduction द्वारा आ एटी fragmentation भी common था गोटे पार्ट ता भांगी गला जो पार्ट ता भांगीला सी एबे जाई कि गोटे favorable condition रे optimum temperature रे सी जाई ग्रो करबे स्टार्ट कर दो the sex organs are basically absent but plasmogamy occurs by fusion of two vegetative cells of different strains of genotypes. Very, very important line. Kindly focus upon here. Age are focus करे part टाइम important अच्छी. मतलब आंखों पे sex organ नहीं. Sex organ आंखों पे present नहीं. आंखों पे जो male female में कहीं पर भी नहीं. But still it plasmogamy होची. But से plasmogamy ने कौन ही तिला? दीटा compatible hyphae of opposite type आसिक आपस में bind होते ले. ये तो opposite type तो ही पढ़ना है. कहीं के ही पढ़ना है ना. ये sex organ तो absent अच्छी. बट स्टिल प्लाज्मोगामी केमती हबो ए जगह पिला माने मन रखिबो ना आंसर होची यार एटी दीटा अलगा अलगा स्ट्रेन नि आइची दीटा डिफरेंट जीनोटाइप नि आइची सो जीनोटाइप रो माने कोन स्ट्रेन रो माने कोन डिफरेंट तो अन्य न बुझी गेलो जो डिफरेंट सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप स्ट्रेन्स रो माने हला वैरायटी दिन मु कहली कि मैंगो इज मैंजिफेरा इंडिका बट आर ऑल मैंगो सेम सब जगह मैंगो समान हबो कि डिफरेंट वैरायटी नहीं यस अच्छी मोगल चाउल बा धान रो साइंटिफिक नेम हे गेला ओराइजा सटाइबा बट आर ऑल राइस आर सिमिलर सम सिमिलर हेबे कि नो ता भीतर बासमती राइस अछि ता भीतर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मर राइस प्रेजेंट अछंती देन द सेम इट इज अ फंगस अछि ये गोटी स्पेसीज हे थाई पारे बट अंकर स्ट्रेन वेराई करती अंकर जो वेराइटीज अलग अलग आछि और यू कैन से जीनोटाइप जीनोटाइप वर्ड कोन हे गेला ना जीनोटाइप ही होस तार इंटरनल अकरेंस केमे से इंटरनली प्रेजेंट अछि ज टमोटी मन रखिया पई कोई भी जीनोटाइप को एग्जांपल दे बुझेबी स्कूल में जो पढितिला आनुवंशिकी चैप्टर हेरेडिटी चैप्टर जो पढितिला सेठी आसला का कथा मेंडलिज्म
एंड मेंडल कहते कि जब कैपिटल टी आसीबो आंसर होची टल जब कैपिटल टी स्मॉल टी आसीबो अगेन द प्लांट इज टल जब स्मॉल टी आसुची द प्लांट इज ड्वार्फ और द प्लांट इज शॉर्ट so what is this T, capital T, small t, small t, small t? Now these are the different genotype. Genotype ଯେମିତିଆ ହବ phenotype ସେମିତିଆ ହବ ଗୋଟେ word ମନେ ରଖିବ genotype controls phenotype ଆଉ genotype କିଏ ଏଠି ନା capital T ଏମାନେ ହେଲେ pure plant ତ ये tall ହବ small t again ବି pure plant ये dwarf ହେବେ जो capital T small t ଆସିଲେ heterogametic condition ଗୋଟେ capital ଅଛି ଗୋଟେ small ଅଛି and the capital is dominant over the small that's why it is called as tall plant ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁଛେ ତ ଏଠି ଜିନୋଟାଇପ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରିବ ଦିଟା tall plant ଅଛନ୍ତି capital T ବି tall ହବ capital T small t ବି tall ହବ but ଦିଟାକ tall ବାହାର ପଟୁ ସମାନ ଅଛି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତର ପାର୍ଟଟି ଅସମାନ ଅଛି because ଜଣେ pure condition ଅଛି ଜଣେ hybrid condition ଅଛି ଆମକୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ I hope genotypes କଣ ତମେ ବୁଝିପାଇଲ strains କଣ ଜାଣିପାଇଲ So they do not have sex organs, but the plasmogamy party occur it is due to fusion of two vegetative cells of different strains or genotype. Different strain or different genotype of cell माने ସେମାନେ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି somatic cell माने बुझ पड़छटी somatic cell माने कोन जो cell reproduction କିଛି लेन देन नहीं सोमियो को सेता ओडिया तमे कहतिलो and next the resultant structure of formation haba resultant means so product एठु बनिला that is dikaryotic what do you mean by dikaryotic एबे भी बुझीतिली dikaryotic माने कोन n plus n 2n ही बुझो छ dikaryotic माने कोन हे गेला एठी ने माने n plus n कंडीशन रही चंदी ये गोटे जणा को न्यूक्लियस n आउ जणा को पाखरे हे गेला प्लस आउ गोटे n होई जो they are not 2n in immediately 2n हेबेनी से माने n plus n कंडीशन प्रेजेंट अछंदी that is called as dikaryotic बुझपाइले पिला माने ये n plus n condition present अछंती 2n हेइनांती immediately हेइनांती later they will form 2n later टिके समय परे हेबे but एबे recently से माने n plus n अछंती and what is plasmogamy माने कोन थिला ना fusion of two protoplasm दीटा protoplasm आपस से fuse करी गले protoplasm fuse कर सेला परे ताको जो न्यूक्लियस टी अछि से fuse न करी के से ए भले n plus n condition अछि क्लियर ଆଉ ଏଠୁ କଣ ବନିବ ବେସିଡିୟମ ଫର୍ମେସନ ହବ ଯେମିତି ସେଠି କୋନିଡିୟମ ଫର୍ମେସନ ହଉଥିଲା ଏଠି ବେସିଡିୟମ ଫର୍ମେସନ ହବ ସେଠି ଆସ୍କୋ କାର୍ପ ଥିଲା ଏଠି ବେସିଡିଓ କାର୍ପ ଆସିବ ସେଠି ଆସ୍କୋସ୍ପୋର ଥିଲା ଏଠି ବେସିଡିଓ ସ୍ପୋର ଆସିବ ଜିନିଷ ଏକା ଖାଲି ନା ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆସ୍କୋମାଇସିଟିସ ର ଫ୍ରୁଟିଂ ବଡି ର ନା ଆସ୍କୋ କାର୍ପ ବେସିଡିଓ ମାଇସିଟିସ ର ଫ୍ରୁଟିଂ ବଡି ର ନା ବେସିଡିଓ କାର୍ପ ଆସ୍କୋମାଇସିଟିସ ର ସ୍ପୋର ନା ଆସ୍କୋସ୍ପୋର୍ସ ବେସିଡିଓ ମାଇସିଟିସ ର ସ୍ପୋର ନା बेसिडियो स्पोर्ट्स सेट थिला आस्की बा आस्कस बा आस्की एडी बेसिडियम बा बेसिडिया से पार्टी आसु सब समान यू कैन सी ओवर हियर ये हला तार गोटे जो डायग्राम के भलसे मार्क कर देखो पिला मन टिके जूम कर डायग्राम को देखो ये तळे तम दिया है कोन ना गोटे आस्कस जो बेसिडियो स्पोर एग्जांपल टे देछि ये जो हमर एगारिकस रे एग्जांपल देछि तो गोटे पार्ट को ना जूम करी जो देखिबी कट के जो गिल्स वाला पार्ट अछि से कैप वाला पार्ट को जूम करी जो देखिबी I can see over here the very large number of basidiums are there. गोटे गिल अछि wearing basidia basidia हला प्लुरल फॉर्म रे ता भीतर आसिला के basidium क्लियर आ ए basidium भीतर कमन रहले basidium भीतर कमन basidio स्पोर्ट्स माने प्रेजेंट हे अछंदी आंकर गोटे फ्रूटिंग बॉडी अछि आ फ्रूटिंग बॉडी तले की अछि माइसिलियम प्रेजेंट अछि ऊपर पार्ट हला फ्रूटिंग बॉडी तळ पार्ट हला माइसिलियम क्लियर ये हला जिंस एतिकी मन रखिबा ए पार्ट को माइसिलम तळे तार नेटवर्क हे रूट वाला स्ट्रक्चर बनेछि आ ऊपर तार हला फ्लोटिंग बॉडी जोडा कि ऊपर तुम देखि पाछो क्लियरली नेक्स्ट now here karyogamy and meiosis occur in basidium producing four basidiospores exogenously karyogamy माने बुझ परछो फर्स्ट हे गेला प्लाज्मोगामी देन हबो karyogamy देन तापर हबो meiosis प्लाज्मोगामी कोन हेछि फ्यूजन ऑफ टू प्रोटोप्लाज्म karyogamy कोन हबो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस एंड देन कोन आसीबो लास्ट के आसीबो लास्ट आसो meiosis रो माने कोन हे गेला ना एठी रिडक्शनल सेल डिवीजन नि के चारिटा हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन हबो and जो बेसिडियो स्पोर्स माने केमिति बनि जनी एक्सोजेनसली माने बाहर पटो बनि बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज बेसिडियोकार्प एग्जांपल agaricus जेमति मशरूम हे गेला
अस्टिलागो जेमती स्मार्ट हे गला एंड पॉक्सिनिया हे गला रस्ट फंगस देन तीनटा एग्जांपल आकु केमती मन रखिबा ना आकु मन रखिबा केमती ना PUA पुआ पुआ करी मन रखि दो पुआ माने कोन हे गला P फॉर पॉक्सिनिया U for Astilago and A for Agaricus. P re Puccinia, that is called as rust fungus. Then second case second one is called as Astilago, smart jab hum कहते and A is Agaricus jab hum खाउचे Agaricus dispersible ताकू कहि परिबो. तापर असला लास्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज द ड्यूटेरोमाइसिटिस एति सरला परे हमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिबा मन रखिबा जेमती फाइकोमाइसिटिस थिला फाइकोमाइसिटिस को अन्य कोन कहतिला हमें लोअर फंगी देन आसिला एस्कोमाइसिटिस ताको हमें कहले सैक फंगी थर्ड आसिला बेसिडोमाइसिटिस बा क्लव फंगी एंड लास्ट पड़ला ड्यूटेरोमाइसिटिस दैट इज कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगी अब इम्परफेक्ट काई को जाउची बिकॉज़ असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस आर नोन बट सेक्सुअल पार्ट ताको जणा नहीं. When the perfect or the sexual stages are discovered, they are often moved to ascomycetes or basidiomycetes. With the sexual reproduction कथा आसिला, they सबनी कौन हे गले? They can be ascomycetes, they can be basidiomycetes. They convert semane हे गले. It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name, placing under deuteromycetes, and the sexual stage having another name, placing under another class. It is simple. मोटामोटी जो बुझियो तो ट्राई करिवो. Imperfect fungi काहेकि imperfect को होची? Reason होची कोन? आंकर asexual reproduction तो जणा अछि. आंकर vegetative reproduction तो जणा अछि. तो जो sexual reproduction करचंदी, they are either showing the uh, they are either showing the characteristics of basidiomycetes or they are showing the characteristics of ascomycetes. So when deuteromycetes आसु नाहंती जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कथा आसुची से माने या तो पढौचनी ascomycetes को नहले basidiomycetes को. That's why they are called as imperfect fungi. It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name, placing under deuteromycetes, and the sexual stage having another name, placing under another class. And when the linkages were established, the linkages को हम establish कर लेता हूँ, link कर ले चारी पटो देखिले कौन, the fungi were correctly identified and moved out of deuteromycetes. deuteromycetes बाहर ऊपर चंदी किए जाए कि निजे को basidiomycetes से कंसीडर कर लेनी किए जाए निजे को ascomycetes से कंसीडर कर लेनी. That's why it is called as imperfect fungi. And एमाने रिप्रोडक्शन करछन केमिति ना asexual spore द रिप्रोडक्शन करंती asexual spore के बनिबा conidia formation हबा. And mycelium, I told you earlier, the mycelium is septate and branch. The mycelium is कौन अछि? These are septate. आंगरे septum present अछि, cross wall present अछि, boundary present अछि, and they are branched. That means they are having uninucleate. They do not have multiple nucleus. Some are saprophytes or some are parasites. Even saprophytic achandi, that means they depend upon dead and decaying organism. Some are parasite. Parasite means जो माने काम करचनी कहा ऊपर ना living host ऊपर जाके attack करचनी, और that is called as parasite. Majority are decomposers of litter. Litter है गलाटी वर्ज्य वस्तु waste material. सेमान ताको decompose करचनी and helping mineral cycling. अब आर example मन देखो कि Alternaria, Colitotrichum and Trichoderma. आर ट्रिकेल कौन मन रखिया पई cat. The mnemonics to remember it is called as cat. CAAT. Cat मन देख सेठी दिला पुआ एठी गेला cat. Cat माने कोन ना C रे Colitotrichum, A रे Alternaria, T रे Trichoderma. These are the three different examples of deuteromycetes. Which pile? Now it's time for question answer. Now I need your participation, the participants. Subhranshu Shekhar Dhir, Soumyasri Mishra, Smruti Rekha Sahu, Ekama Higher Secondary School, Smruti Singh, Angul Mahila Mahavidyalaya, Ramaji Higher Secondary School, Bhismagiri, R.K. Khandwal, Purbi, Pragya, Prabhasini, Nandini, Government Higher Secondary School, Phulbani, Gayatri, Ekamra Higher Secondary School, CRG Arman, Anandita Maiti, Aditya Mishra, Abhinash. So dear participants, kindly participate in this part. And of course the full moon, FMB full moon, समस्त को request रहेगा, kindly answer the question answer round, take part in the question answer round and check your knowledge. तुम कितने बुझला कितने मन रख पाइलो. First question, which of the following is not a characteristics of fungi?
Fungus ର characteristics କୋଉଟା ନୁହେଁ ଆ ଭିତରୁ, not a characteristics. Presence of chlorophyll. Yes, good. Presence of chlorophyll is the right answer because they are having cell wall, which is made up of chitin. They are having saprophytic nutrition, which is again correct, and they are eukaryotic cells. Yes, it is correct. The only answer which is wrong over here is option number B, that is presence of chlorophyll. They are saprophytes. They cannot produce their own food. Then the right answer is option B. Yes. Good, good, good. I got 3 responses, 4 responses till now, and all are correct answer. Now move to question number 2. Which of the following is known as the imperfect fungi? Ebe recently koise sange sange The bujhechi. deuteromycetes. Yes, good, very good. Deuteromycetes is the correct answer. Next, in the ascomycetes segment, Ascospores. ascomycetes asexual reproduction leads to the formation of ascospore. Basidiomycetes is a basidiospore. Ascomycetes is a ascospore. Yes, correct. Shubhranshu Sekhar, Nandini Mahapatra, Smruti Dekha, R.K. Khandwal, everybody is giving right answer, correct answer. Okay. Next, in fungi, the structure of the body is generally composed of dash. Hyphae. Option A, hyphae. Yes, it's made up of hyphae. Group of hyphae or group of mycelium मिसी कौन बनेचनी fungus को compose करचनी. If you move to the next question, which of the following is correctly matched? Phycomycetes zoospore, Ascomycetes basidiospore, Basidiomycetes ascus, Deuteromycetes sexual reproduction. Correctly के match करची. Phycomycetes zoospore. Yes, correct. Phycomycetes zoospore is the correct answer. କାହିଁକି ନା ascomycetes ରେ ଏଠି ascus ବନିବା କଥା, basidiomycetes ରେ basidiospore ବନିବା କଥା. ଆଉ deuteromycetes sexual reproduction show ହିଁ କରେନି, ତାକୁ imperfect ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ. The right answer is option A, that is Phycomycetes zoospore. And ଖୁସିର କଥା ହଉଛି କି ଏ ସବୁ previous year question ବି ଉଠେଇକି ମୁଁ ଆଣିଛି. ବାବା NEET entrance ରେ ଏଇ basic question ବି ପଚାରି ପାରେ. ଏବେ ଏଇ question ତମକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ଇଜି ଲାଗୁଛି, reason କଣ? reason ତମେ recently ପଢିଲେ ଏଇ ପାର୍ଟଟି, ଆଉ ତମେ first year student କୁ belong କରୁଛ, ତମେ ଏତିକି ହିଁ syllabus complete କରିଛ. ଯୋଉ 32 ଟା chapter complete ତମେ କରିପାରିବ, ମାନେ ଏବେ 19 ଟା chapter in first year and ସେପଟେ ଆସିଗଲା 13 ଟା chapter in second year, ମିଶିଲେ 32 ଟା chapter ହବ. ସେତେବେଳେ କି ତମେ ଜାଣିପାରିବ କି ଏଇ basic question ତମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଇଯିବ. ଏବେ ସହଜ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଏବେ ତମେ recently ଆକୁ ପଢିଛ, ମନେ ରଖିଛ. Now, very good interaction. Question number 6. Which of the following fungal group is called as clove fungi? The Clove fungi. Basidiomycetes. Yes, Basidiomycetes is called as clove fungi. Let me remind you once again. Ascomycetes is sac fungi. Yes, Ascomycetes is sac fungi. Phycomycetes tamar hegala lower fungi. Deuteromycetes is imperfect fungi, and Basidiomycetes is the clove fungi. Can you tell me what is the example of clove fungi? Basidiomycetes रे example कौन है परिबो? Yes, question number 6. So answer समझते D लिखिचो correct अच्छी. Can you remind me what is the answer? Example. Mushroom. Agaricus ହେଇଗଲା, mushroom ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣ ମନେ ରଖିଛ? Smart. Yes, smart ହେଇପାରିବ. ଯୋଉ PUA ମନେ ରଖିଥିଲି. P stands for Oxinia, Ostilago, Agaricus. ମନେ ରଖିବ. Now, question number 7. Which of the following fungal species is used in bread making and alcohol production? Yes. The Saccharum. Yes, Saccharomyces. Saccharomyces is the correct answer. Yes, Saccharomyces को हमें कौन कहते हैं? Saccharomyces is also called as your yeast बोलते, commonly called as yeast. Yeast दी प्रकार का ना अच्छी कोड़ा ला baker's yeast, कोड़ा ला brewer's yeast. Baker's yeast और brewer's yeast जो अच्छे ने baker's yeast बने जानते bread making, and brewer's yeast बने जानती तुम्हारा beverages बनाती but alcohol fermentation करी बने जानती. Clear? The 7th question तुम समझ से ठीक आंसर दीजो. You all got 7 crore rupees in your bank account. Now, let's come to the question number 8. Fungi that lack septa in their hyphae are referred to as dash. The fungi which do not have septum in the hyphae is called as dash. Yes, the correct answer. Anandita Maiti is saying sinusitic. Yes, it is correct.
Sinusitic is the right answer because जहाँ पाखरे septum नहीं, lack septum means they do not have the septum. Yes, Nandini Mahapatra again giving the correct answer. Septum नहीं माने accepted और accepted रो अन्य part है sinusitic. मान रखियो जी accepted सी sinusitic. Clear? तो समस्त आंसर करेक्ट है. Yes, RK Khandwal will be correct answer. Subhanshu Sekhar correct answer. That answer is sinusitic. Now, which of the following is an example of an edible fungi? Sir, agaricus. Yes, agaricus is the edible fungi that we eat. Then, now, which of the following fungi is used in the production of antibiotics? Antibiotics रे कहाँ रे use हमें करते? The first antibiotic. The penicillium. Good. Penicillium notatum is the right answer. This is the example of antibiotic. And who discovered this penicillium notatum? The penicillin के discover करथिले? Alexander Fleming. Alexander Fleming. And तांका सहित टिके स्टोरी टिके मन रखि दिया. मोटा मोटी टिके पॉज करोची ब्रेक नोचे एठी बुझेया पई कि जो पेनिसिलियम स्टोरी टा खाली मन रख. Penicillium is called as accidental discovery. What do you mean by accidental discovery? Accidental टिके kindly mute हे जाओ जो मैंने unmute अच्छो. Accidental discovery माने हला कौन ना से जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से काम करथि से बैक्टीरियोलॉजिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हम दम कहि परिबो. से काम करथिले का ऊपर गोटे बैक्टीरिया ऊपर. से बैक्टीरिया ना थिला कोन स्टाफाइलोकोकस ऑरियस. स्टाफाइलोकोकस ऑरियस इज अ बैक्टीरिया. सीधा तंग बैक्टीरिया रो गोटे से खोजथिले कि बैक्टीरिया के मारी परिबो. ये गोटे पैरासाइटिक बैक्टीरिया टी अछि. ये जाई कि डिजीज क्रिएट करोछि. ये जो पैथोजेन टी गोटे हार्मफुल बैक्टीरिया टी आको मारिबो कि. तो एमती बहुत रिसर्च कला पर से आंसर पाउ नथिले. तो वन डे से तंगर सब रिसर्च फेड अप हे कि से जो प्लेट्स करा जो जो हमर माइक्रोबियल कल्चर जो हम कहिथो पेट्रिटिस बोले गोटे गोलिया गोलिया प्लेट सब थाए ताको एमती फोबाड दे पळैथिले कि बेले बेले हुए ना तुम जो डिमोटिवेशन पळे आसे बा सैचुरेशन पॉइंट गोटे पळे आसे फ्रस्ट्रेशन पळे आसे तो से फ्रस्ट्रेटिव छाड़ दे पळैथिले. देन बहुत दिन पर जब से रिटर्न में ताको लैब को देखिले कि सेठी जो तांकर बैक्टीरिया कल्चर प्लेट जो अनवाश कल्चर प्लेट पड़िथिला वन ऑफ द कल्चर प्लेट्स देखिले कि गोटे मोल्ड टे ग्रो करछि. मोल्ड माने वन काइंड ऑफ फंगस टे ग्रो करछि और जहार प्रेजेंस रे ए जो स्टाफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया माने साइड रे ग्रो करि पारु नाहंती. गोटे सर्कल वाला फॉर्मेशन हे जा चारिपटे केही भी ग्रो करि पारु नाहंती. तो से तांको आईडिया आसले कि भाई ये जिंसटी किए माने एते ताकतवर आर प्रेजेंस से माने कि ग्रो करू नाहंती. सेठ से जानिले कि से जो मोल्ड अछि थेला पेनिसिलियम नोटेटम और ता पर गोटे एक्टिव कंपाउंड अछि ता नाला पेनिसिलिन ता नाम से डेटा पेनिसिलिन ना आइतला. हेले आर यूज कोडी करिवे से तम जाना नथिला. देन एंट्री कले के साइंटिस्ट हमर अर्नस्टाइन एंड हार्वर्ड फ्लोरी. तो एमाने मिसिकी से जो पेनिसिलिन रो फुल पोटेंशियल को डिस्कवर करथिले और से फुल पोटेंशियल डिस्कवर हैला परे फाइनली जाई कि 1945 रे the three eminent scientists Alexander Fleming, Howard Florey and Einstein were awarded with the ultimate Nobel Prize ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା. and ସେ penicillin को यूज कराइଥିଲା कोठी to the soldiers wounded soldiers कोठी का ना American soldiers during the second world war 2. तो वर्ल्ड वार 2 जब हेतिला सेकंड वर्ल्ड वार हेतिला से टाइम रे अमेरिकन सोल्जर्स माने यूज करथिले. नाउ कैन यू टेल मी अदर एंटीबायोटिक्स जितो हला पेनिसिलिन गोटे एंटीबायोटिक हला तमे जानि छ कि एंटीबायोटिक कैन यू टेल मी जस्ट फॉर एन इंटरेक्शन तमे आ को एंटीबायोटिक ना सुनि छ बा कॉमनली यूज करि छ देह खराब हला में एंटीबायोटिक खाइ तो एनी नेम ऑफ एंटीबायोटिक यू नो. Paracetamol is not an antibiotic beta. No Nandini, paracetamol is not an antibiotic. Paracetamol गोटे होची जे तमरो टेम्परेचर को रिलीज करता है पेन किलर. पेन हटै दबो इन्फ्लेमेशन हटै दबो टेम्परेचर को रिलीज कर दबो बॉडी रे ताको कम डिक्रीज करै दबो. एंड आई एम आस्किंग अबाउट एंटीबायोटिक्स Sir, मन पड़छि. azithromycin. Yes, very good. Azithromycin. Azithromycin जो तमे कोविड टाइम रे खाइथिबो azithromycin, canamycin, ampicillin, amoxicillin, doxycycline, tetraphenol. These are the different kind of chloramphenicol. These are different kind of antibiotics present over here. Clear? आको हम यूज करते हैं बॉडी किसी भी इन्फेक्शन हेले. एंटी मींस अगेंस्ट, बायो मींस लाइफ. तो ये बैक्टीरिया रो लाइफ रो अगेंस्ट रे काम करंदी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स. खाली बैक्टीरिया नहीं फंगस को भी मारी परिबे माने ए जो हाजार्डस केमिकल लाको पाखे अछि ये मारंती नहीं. एग्जैक्टली कोन कोन जानछनी दी प्रकार पार्ट अछि. दे कैन स्टॉप द ग्रोथ
that is called as bacteriostatic, and second is they can kill them, that is called as bactericidal. There are some antibiotics, some kama mode of pathway kon achi, they can kill the bacteria completely, that is called bactericidal. mardela taku pura nahale taku pangu kar daba, ta hato goda bhangi pakai daba, that is called as bacteriostatic. ye bacteria to achi hele se grow kari paribani. तो दी प्रकार एंटीबायोटिक्स थाकि चलो ठीक अछि आम पुणी रिज्यूम करबा एटू क्वेश्चन आसला नंबर 11 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी टिपिकली इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस को प्रोसेस माने फॉलो करछनी The वन इज plasmogamy, paragamy, meiosis. yes very good when I called this sexual reproduction tinta part achi one Sir, is option B. karyogamy. Yes, option B is the correct answer, plasmogamy, karyogamy and meiosis. Now which one of the last 3-4 questions, which one of the following is a mutualistic association between fungi and algae? Mutualistic means symbiotic. Symbiotic means sahajibita. The Both lichen. lichen. The correct answer is lichen. Lichen is called as the symbiotic association between algae and fungi. Yes, correct answer is option B, that is lichen. Next, the reproductive structure that distinguishes ascomycetes. Sir, Ascomycetes ascus. कौन होता है ना? Ascus. Very easy. Ask us. Now, the phycomycetes are characterized by dash. Phycomycetes is a common. Asexual reproduction by motile spores. Sir, option C. Option C, correct answer. Asexual reproduction by motile spores, and motile spores रो example केतला Jew spores. If you remember, Jew means motile, aplano means एगला non-motile. Clear? Septate हबनी काहे ना septate तार characteristics नुहे आको छाड़ी समस्त पर septum अछि. Unicellular structure आंको पाखे नहीं. All fungus are multicellular. केवल गोटे exception देला yeast, और yeast belong करছে ascomycetes को. Asexual reproduction sex motile spores. Yes, it is the correct answer. Now, which of the following statements about deuteromycetes is true? Sir, option B, they reproduce asexually by conidia. Yes. Yes, sir, option. Formation करछन्ती asexual reproduction करछन्ती PPT रो गोटे डायरेक्ट लाइन की पचारछि इनसाइड डायरेक्ट लाइन टेटी पचारछि. तो टिल नाउ आमे 15 टा क्वेश्चन जो माने प्रीवियस ईयर नीट माने नीट हला एआईपीएमटी एग्जाम ही गला ओयूटी ही गला ए सब एग्जाम रो केवल क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस रो एती क्वेश्चन उठे के आनिथली 15 टा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस पाएंगे प्रिपरेशन पाएंगे एंड खुशी लगला सक्सेसफुल तमे पार्टी कंप्लीट कला आंसर देला. तो हियर वी आर एंडिंग आवर फर्स्ट क्लास. ଆଉ ଦେନ୍ ତାପରେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍. Attention for your kind information, you can log in to sikhyajyoti.odisha.gov.in and you can get this PDF, get this note from that site. और जो मान किसी डाउट रहउची you can ask to your nodal officer. तम स्कूल ले जो हायर सेकेंडरी से जो nodal officer अछंती you can directly ask to them. And thank you so much for your kind attention. We'll definitely meet after a short break. So let's take a quick break of 15 minutes and then at 9:15, sharp 9:15, I'm waiting for all of you for the next chapter, that is this. Me and this panda both are waiting for you. Okay.
काय करছিস কোনটা বলছো সব জ্ঞান জানি Sound listener free fire से उसे হাত ধর পাট ধর তো এসে যেতে আসছে না वजह से भी लोगों ने
Hello everyone, welcome once again to all of you. Very shortly, I'm going to start the second class. Just hold for a second. Let me clear the screen. Some people are already annotated all those parts. Now I think it's clear. Yes, sir. All right. No. Okay. So now you can see the slides. Am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. All right. All right. So here we are going to start our second class. That is a brief introduction about Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. Why this picture? Because this picture saying two things. One showing the Kingdom Plantae, the green leaves, the green plants, and second showing the Kingdom Animalia. Okay. So first of all, what is the need of classification? The students, my question to all of you. Uh, Answer me in the chat box. What is the need of classification? Why we classified all those organisms? କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ classify कले कौन ପାଇଁ कले? Just tell me. You can answer me in the chat box. What is the need of this classification? Why we classified organisms into Kingdom Plantae, Kingdom Animalia? Who classified? Who has started the classification? There are some basic questions. Few questions. Then we'll start the class. Easy to study, and someone saying Aristotle classified all those things. Okay. Now, who is called as father of taxonomy? Ki start karsile first of all. Carolus Linnaeus. Yes. Binomial nomenclature, Systema Naturae book written by Carolus Linnaeus, who has classified entire living organisms into two parts. That is Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. Now the second, on which basis he has classified? Like Carlos Linnaeus classified all the living organisms into Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. Now my question is, on which basis? On what basis? ताको basis कौन थिला? Sir, cellular presence of abs. Presence or absence of cell wall. Correct. आउ भी कहि परिबा कि ताको mode of nutrition जदि हमें देखिबा whether they are autotroph or they are heterotroph. सही basis से divide करतले. Good. Now ठीक अछि. You have some basic information. हम सही part to start करि परिबा. Now let's begin. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae start करते हैं. Okay, you can see Kingdom Plantae. A very tremendous picture as about the sunlight tam pakhku asuchi. It's like a blessing coming to all of you, and tumane se blessings to receive kara. Sun is the ultimate source of energy. सब जगह एनर्जी सोर्स से ही आसी बिकॉज आमको बंचिया दरकार एनर्जी फॉर एनर्जी वी आर इटिंग फूड फूड आस बेसिकली डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट ओनली एंड प्लांट से फूड बनौची केमती से ग्लूकोज बनौची केमती बाय द प्रोसेस कॉल्ड photosynthesis process we require the chemical energy like the ATP and the NADPH, and again the ATP and NADPH are made by using the light energy. Then the ultimate source of energy is the light, the sunlight. Now, Kingdom Plantae, you can see all of these organisms are basically eukaryotes. They all are eukaryotes. They're having chlorophylls and they are having a cellulosic cell wall. Then the plants are eukaryotic chlorophyll containing organisms
with cellulosic cell wall. आंको समस्त cell wall ले किए अच्छे cellulose present अच्छे. Some are partial heterotrophs such as the insectivorous plant, but the bladderwort hegala ba venous flytrap hegala, or some are parasites called as cossuta. But majority of them are autotrophs and they do not depend on anything. They can produce their own food by themselves only because they are having a gifted thing. That gifted thing is chloroplast. Done. All right, clear till this? Yes, sir. Okay. किंतु पिलामाने एटा छोटिया इनफॉरमेशन टे मु ऐड ऑन करिया को चाहिबे छोटिया इनफॉरमेशन टे होजे कोन ना हमर जो किंगडम प्लांटी अछि किंगडम प्लांटी रे जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स माने अछि लाइक द थालोफाइटा द ब्रायोफाइटा द टेरिडोफाइटा द स्पर्मेटोफाइटा सही टिके डिफरेंस रहबो सेल वाला कंपोजिशन रे कोन डिफरेंस रहबो इफ यू गो टू योर एनसीईआरटी बुक चैप्टर होस तमरा सेल चैप्टर सेल वाल को जीवो सेल वाल भीतर तुम पाई परिबो गोटे लाइन लिखाई छी ए जो प्लांट्स मानक भितर जो algae अछंती तांकर सेलुलर कंपोजिशन हो जे कोन सेल्युलोज गैलेक्टन्स मनान्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. Listen me carefully. If you go to your cell chapter, NCERT, open your NCERT book, go to the cell chapter. Cell chapter तम पाइबो कहा कथा about the cell wall और सेट जो cell wall अछि cell wall देखियो तमे plants मनन केस रे डिफर हिची. Like in the plants like algae, the plants like thallophyta, you will find the composition of cell wall is your cellulose, second resibo galactans, third resibo mannans, and fourth resibo minerals like calcium carbonate, CaCO3. But in case of other plants will like the bryophyte, the pteridophyte, the gymnosperm, the angiosperm, seti cellular composition cellulose is made up of cellulose, hemicellulose, proteins, and pectins. Clear? So this information you need to understand. Mutama kingdom Plantae gote word कहले कि these are the chlorophyll containing organisms having a cellulosic cell wall. But cellulose is not the only thing present in the cell wall. Cell wall composition vary करछि from plant to plant. जेमति हम कहली cell wall composition vary करिवो. In case of cell wall कहा पाखर अछि kingdom Monera contains cell wall, kingdom Fungi contains cell wall, kingdom Plantae contains cell wall, but kingdom Monera cell wall composition अलगा रहइबो, kingdom Fungi cell wall composition अलगा रहइबो, and kingdom plant cell wall composition अलगा रहइबो. You need to understand and you also need to remember. काहेकि ना तुम एंट्रेंस से टू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है one is a factual question, second is a conceptual question, and this belong to the factual part. Factual part you need to remember कि cell wall composition कोठी कौन अछि बोली. Now the second line showing that some are partial heterotrophs. Usually almost all of the kingdom Plantae are autotrophs, but some are partially heterotrophs. Partially means not fully. Like the insectivorous plants bladderwort and venous flytrap. जो तमे कहतले जो कमंडलु गच्छ हे गला जो venous flytrap हे गला एमन कोन कर परछन ना insects को खाइ दउछन कैप्चर करछन. Insect से माने अट्रैक्ट करछन ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ଫେରୋମନ୍ସ ବନଉଛନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନେକ୍ଟର ବନଉଛନ୍ତି so that ସେ ଇନସେକ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଯେବେ ସେ ଆସି ଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ ତାର ଯୋଉ ଦିଟା ଏଣ୍ଡ ଅଛି ସେ ଏବେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲା. ମାମା ଯୋଉ ଘରେ କାକରା ପିଠା ବନାନ୍ତି କାକରା ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଛାଞ୍ଚ ଥାଏ ସେଇ ଟାଇପ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ହେଇଛି ଏମାନେ ତାକୁ ଆମେ ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଲେ. ଦେନ୍ ସେ ଇନସେକ୍ଟ ରୁ କଣ ପାଇବେ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ପାଇବେ. ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ମେଟେରିଆଲ ତା ଭିତରେ ପାଇବେ. ଇନସେକ୍ଟ ଯୋଉ ଏବେ ମରିବ ସଢିବ ପଚିବ ସେଠୁ ସେ ପ୍ରୋଟିନ ଡିରାଇଭ କରିକି ନିଜକୁ ଅବିକା ଦେବେ. So they are carnivorous plant बोलते हो कोई परिवा. They are animal eaters, carnivorous plant भी कोई परिवा तंको. And किसी के जो अच्छे नहीं parasite. Parasite की देखो एमाने जो कामोटी कले insectivorous plant they are called as predators. से माने शिकार करी खाइले. माने जो plant है गला Venus flytrap plant is the predator and सेपटे जो insect है गला से है गला prey. And the interaction is called as predation. चिंता वर्ड कहली. The plant is here the predator. The plant kindly mute yourself, your participants. जब आंसर दबार अच्छी से टाइम में तुम अनम्यूट ही जीवो नो इश्यूज बाकी टाइम में काइंडली म्यूट रह जाओ. ओके तो तीनटा वर्ड एठे मु कहली द प्लांट इज द प्रेडेटर ओवर हियर, सेकंड द एनिमल द इंसेक्ट इज द प्रे ओवर हियर, and the entire process is called as predation. Predation means it is a kind of interaction when two species with one species kills another species and eat it. That one is benefited, another is getting harmed. जने बेनिफिट पाइला जो प्लांट बेनिफिट पाइला इंसेक्ट रे हार्मला से मरि गला. सेकंड केस जो आसला कस्क्यूटा प्लांट जो ओडे निर्मूली लटा बोली कहछो
ए कस्कुटा प्लांट कोडी ग्रो करछि मैंगो प्लांट रे हेज प्लांट रे ग्रो करछि तो इट इज ए प्लांट जो हे गेला दैट प्लांट इज कॉल्ड एज द होस्ट प्लांट एंड कस्कुटा इज कॉल्ड एज द पैरासाइट एट जणे हे गेला होस्ट जणे हे गेला पैरासाइट एबे बुझो डिफरेंस कोन हैला एठी भी जणकर बेनिफिट होची कस्कुटार बेनिफिट होची हेले प्लांट दैट लॉस होची से तापर डिपेंड करची तार खाइबा से चोरी कर नहीं जाउची तो डिफरेंस कोन असला प्रेडेशन और पैरासिटिज्म रे इन प्रेडेशन द प्रेडेटर कंप्लीटली किल्स इट्स प्रे तो जीवन मारी दउची हेले कस्कुटा प्लांट जो अछि पैरासाइट जो अछि सी तार होस्ट को मारुनी लाइफ जीवन मारुनी तो बंचे के रखुची कहला मु तते तड़पई खाइबी तोटू बट तते मारिबिनी in predation the predator completely kills its जो kills मारी दोजी कहा को ता prey को ता शिकार को हेले एठी कोन होची कस्कुटा प्लांट रे the parasite do not kill completely से कोन करबो ना ताको अबे हार्म पहुंचेबो ता जो अबे ताको लॉस दबा बट जीवन मारिबो नै this kind of interaction is called as parasitism need to remember ये जो पार्ट के हाथ लिंक अछि सेकंड ईयर रे चैप्टर अछि पॉपुलेशन organisms and population सेठी as a species interaction 2024 रे एकटा ओटे लॉन्ग क्वेश्चन आस्थिला योर काउंसिल हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो एनुअल हायर सेकेंडरी एग्जाम जो थाए एचएससी 2024 लॉन्ग क्वेश्चन आस्थिला different kind of interaction between different species जोटे छटा इंटरेक्शन थिला गोटे थिला म्यूचुअलिज्म जोटे दिजन दा बेनिफिट पाए प्लस प्लस गोटे कंपटीशन जोटे कहार बेनिफिट हबनी माइनस माइनस थर्ड आसिला तमर एटी पैरासिटिज्म प्रेडेशन कमेंसालिज्म एंड अमेंसालिज्म छ प्रकार से पार्ट थिला तार एग्जांपल तुम एटु मन रखिला कस्क्यूटा प्लांट रो इंसेक्टिवरस प्लांट रो क्लियर जब तुम अर्लियर कहितले जिनसटे कि एंट्रेंस रे केबे भी से तुमको कहबोनी कि ओके दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फर्स्ट ईयर सिलेबस सेकंड ईयर सिलेबस बॉटनी जूलॉजी ना से तुम इंटरलिंक करी क्वेश्चन पचारिबो ता काम होला तुमको एलिमिनेट करिया पई कि तुम मल्टीपल जर्नल से क्वेश्चन आने तुमको पकेइबो ना now let's quickly move ahead to the next segment okay kingdom Plantae it includes algae it includes bryophyte it includes pteridophyte it includes gymnosperm include angiosperm algae को हमें कौन कहते हैं thallophyta बोली कहते हैं phyte is called thallophyta because the organisms are bearing thallus like structure they do not possess a true leaf they do not possess a true stem true branch true flower true fruit तांको पे किछि भी true जिंस नहीं the all the entire body is made up of one single thallus that's why they are called as thallophyta second asile ko mane bryophytes mane asile and bryophytes these are the amphibians of plant kingdom e mane plant kingdom amphibian boli koha jay remember bryophyte is also considered as the amphibians of plant kingdom mane kono Avinash okay I muted you better now bryophytes asile ko mane the amphibians of plant kingdom akar mukha काम कोन थिला ना से माने एनिमल जो प्लांट किंगडम रे aquatic life रू से माने टेरेस्ट्रियल लाइफ रे गोटे मजरे कनेक्टिंग लिंक हे रहले हम सब जान छी algae कोड स्टार्ट हेतला वाटर लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम वाटर लाइफ टा वाटर रू स्टार्ट हे तो algae मानकर बेसिकली हैबिटेट किए ना वाटर whether it is marine water or fresh water or stagnant water से माने सेटू स्टार्ट करिवे देन असले को माने bryophytes माने जो माने रहिले कोठी they resides at the terrestrial but they are dependent upon water for the sexual reproduction they are living on the जो terrestrial soil ले पहुंचु जंदी हेले से माने डिपेंड करछन कहा पाखरे ना वाटर पे डिपेंड करछन तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज amphibians of plant kingdom third asila pteridophyte the most important classification they are the they are the first terrestrial organism to possess a vascular bundle जो हमें जाइलेम फ्लोएम द vascular bundle कोन है तांकर ओरिजिनेट कोठी छि pteridophyte रो ओरिजिन करछन अंका पाखरे ट्रू लीफ अछि अंका पाखरे ट्रू स्टेम अछि अंका पाखरे ट्रू फ्लावर अछि ट्रू फ्रूट अछि सब फ्लावर नहीं अंका पाखरे फ्लावर ता परे आसीबो but they're having the leaf they're having the stems they're having the roots अंका पे तीनटा का ट्रू पार्ट आसीला then the main important part the vascular bundle one is xylem second is phloem xylem दादर से वाटर कंडक्ट करी परंती phloem दादर से माने फूड को डिस्ट्रीब्यूट करोचंदी टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट clear then asile gymnosperm pila mane gymnosperm and angiosperm both belongs to what both are belonging to spermatophyte because it is seed habitats में start हे गला
Gymnosperm is also called as naked seed. Angiosperm is also called as covered seed. In gymnosperm, you will find the seeds are naked over here. That means the seed is not enclosed by any kind of ovary wall. आ चारिपटे कोनोसी ओवरी वाल एनक्लोज है कि नहीं बा चारिपटे कोनोसी कवरिंग नहीं यूजुअली तमे जो देखो फ्रूट भितरे सीड थाए ना मैंगो रे गोटे फ्रूट भितरे सीड अछि एप्पल फ्रूट भितरे सीड अछि लेमन फ्रूट भितरे सीड ऑरेंज फ्रूट भितरे सीड थाए माने बेसिकली द सीड इज बीइंग कवर्ड बाय अ ovary wall चारिपटे ovary wall pericarp present अछि but in gymnosperm you won't find such kind of things both before fertilization and both after fertilization the seeds are naked over here. That's why they are called as naked seed or gymnosperm that the Odiare Nagna Biji ବୋଲି କହୁଥିଲ. And the last but not the least, the very important part that is the angiosperms or you can say they are the flowering plants. जो beautiful flowers तमे देखि पारछो, the colorful flowers तमे देखि पारछो, the higher plants belong to angiosperms. तो जेमते हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करथिले कि पांचटा किंगडम के ही पहले ना पांचटा किंगडम हे गेले तमरा किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंगी किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमालिया एंड जो सीक्वेंशियल ऑर्डर से माने छिले स्टार्टिंग हेतिला बहुत लोअर ऑर्गेनिजम्स रु एंड एंड ला सब तो हायर ऑर्गेनिजम रे ठीक से बडा एठी जिंस होय जे कोन एठी हमर किंगडम प्लांटी को हम चारटा डिवीजन में डिवाइड करछे चारटा डिवीजन कोन कोन थालोफाइटा Bryophyta, Pteridophyta, and Spermatophyta. That was a phone divided. Actually, Thalophyta with different classes are there. One is taxonomical hierarchy. First is your kingdom, second is your division, third is your class. Then is your order, then is your family, then is your genus, and last is your species. So, kingdom Plantae achi. The division chatta is Thalophyta, Bryophyta, Pteridophyta, and Spermatophyta. Again in the Thallophyta common acile, the tinta class acilla that is called chlorophyceae, phaeophyceae, and rhodophyceae. Chlorophyceae माने किए ना जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स आ पाखर अछि क्लोरोफिल प्रेजेंट अछि माने ग्रीन वाला देखा जाउछन क्लोरोफाइसी से माने हे गेले हमर फ्रेश वाटर बा स्टैग्नेंट वाटर द algae माने क्लोरोफाइसी ठीक जदि हार्ड पार्ट को जिबा विल फाइंड rhodophyceae the brown algae commonly called as sorry the phaeophyceae commonly called as the brown algae sorry my mistake पिला माने फर्स्ट हे गेला क्लोरोफाइसी the green algae second asila phaeophyceae the brown algae and then asila rhodophyceae the red algae clear ये तीनटा पार्ट हे गेले algae then asila का कहता bryophytes bryophyte पुनी के आसिले ना bryophyte asila rixia mercansia funaria sargassum the different parts तो आपको हमें डिवाइड कर देले कहाँ कहाँ भितरे ना bryophytes आसिला तमरे पटे मसेस गोटे आसीबो ता पूर्व से लिवर रोड्स तो लिवर रोड्स एंड मसेस तको हमें डिवाइड करिछि टेरिडोफाइटर की आसिला टेरिडोफाइटर आसिला एटी हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स दी प्रकार पार्ट एटा आसिला गोटे हॉर्सटेल्स अछि गोटे फर्न अछि ताको भी चारटा पार्ट डिवाइड करछे साइलोप्सिडा लाइकोप्सिडा स्पेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा टेरिडोफाइटर then asile gymnosperms then asile angiosperms okay so here my work is just to get you a brief introduction not in the details because a party chapter of biological classification को belong करछे and आमे आगो kingdom Plantae in details पढिया को जाउछे तो एठी मोर काम होतला तुम माने गोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देबी ब्रीफ समरी दे देबी और समरी होची एया ये जो किंगडम प्लांटी में देखुचे किंगडम प्लांटी बहुत बड़ जिंस नुहे चारटा पार्ट में तैयारी होची थालोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा स्पर्मेटोफाइटा again thallophyta asile all those algae and algae फुनी तीन प्रकार chlorophyceae phaeophyceae rhodophyceae फुनी chlorophyceae different example asiba phaeophyceae example asiba rhodophyceae example asiba then bryophytes bryophytes देखिबा पिला माने bryophytes में को माने आसी गले ना bryophytes असले liver rods and mosses ताकर पुनी अछि primary protonema stage secondary protonema stage again they are going to discuss later in details third pteridophytes आसी गले को माने Psilopsida Lycopsida Spenopsida Pteropsida again they are going to be discussed in detail in the later classes then asile gymnosperms then asile angiosperms of flowering plant so here you got a brief introduction a brief summary about the plant kingdom now
Okay, so what is the life cycle of plants? Now, these are two phases. What is life cycle? What do you mean by life cycle? Na तांको जीवन चक्र सेमान तो entire life रे गोटे fetus बा गोटे embryo रू गोटे germinate करथिबा embryo रू जाई कि end of the life रे सेमान को जाके पहुंचली हम समस्त origin हे गोटे zygote diploid cell zygote रू आ से diploid cell zygote ही finally हमें zygote रे हे गले कोन एठी ना zygote रे बनले गोटे fetus embryo टी एम्ब्रियो बनुचे गोटे फिटस फिटस बनुचे गोटे बेबी बेबी रे बनिबा चाइल्ड चाइल्ड रे बनिबा तमर एटे टीनेजर देन तमे चाइल्ड टीनेजर तम बनि गला यूथ देन तम बन जाउ एडल्ट देन तम हे जाउ ओल्ड तापरे राम नाम सत्य है गोल्ड सैला कथा है तो एंटायर जो लाइफ साइकिल चली द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज टू फेजेस वन इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक सेकंड इज हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक जो डिप्लॉयड अछि से स्पोरोफाइट शो करिवो टू एन इन नेचर the haploid से gametophyte show करिवो n in nature and these phases alternate with each other ये alternate करिवो आज जे diploid अछि काली से फोन meiosis करिक haploid हिजबो and again जे haploid अछि से फोन fusion करिकि fertilization करिकि diploid convert हिजबे that is called as alteration of generation that is this phenomenon means process this very process is called as alteration of generation बुझि पाले रे पिला माने बहुत टाइम हेलानी चुप हे गेलनी एनी डाउट No, sir. अविनाश No, sir. अरमान ओके पिंटू रामाजी हायर सेकेंडरी स्कूल स्मृति अनुगुल हायर सेकेंडरी स्कूल ओके तो बहुत इजी पार्टी थिला सहज पार्टी थिला आर क्वेश्चन आंसर करले हम जानि परिबा ना तो इट इज फर्टिलाइजेशन और मेयोसिस जेटा इंपोर्टेंट प्रोसेस है मेयोसिस कोन होची रिडक्शनल सेल डिवीजन तो तुम ओडिया रे अर्ध विभाजन बोली कहतिलो डिप्लॉयड सेल टी डिवाइड हे कि हैप्लॉयड सेल बनोची गोटे मदर सेल रो सेटी अबिका डॉटर सेल फॉर्मेशन होची तो सब बड़े मन रखिबो नेचर पाखे गोटे ही बाट अछि टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड फ्रॉम डिप्लॉयड देखो हैप्लॉयड रो हैप्लॉयड बनि जिवो डिप्लॉयड रो डिप्लॉयड भी बनि जिवो प्रोसेस ना हला माइटोसिस इक्वेशनल सेल डिवीजन बट डिप्लॉयड रो हैप्लॉयड बनिया पई कि देयर इज ओनली वन मैटर सो ओनली वन चांस होची कि मेयोसिस दैट इज जो स्पोरेंजियम माने थिले जे स्पोरेंजियम आगो जाय डिवाइड हिची मेयोसिस करछि और बनि छि कोन स्पोर्स बनि छि स्पोरेंजियम भीतर के थिला स्पोर मदर सेल प्रेजेंट थिला ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हे गले मेल बनिबो मेगास्पोर मदर सेल हे गले फीमेल बनिबो तो जो स्पोरेंजियम माने भीतर थिला स्पोरेंजियम मदर सेल बा हमर माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल आ से डिवाइड करी मोर जे चारटा हाप्लॉयड स्पोर्स ताको हम माइक्रोस्पोर बा मेगास्पोर कहि परिबा एंड से माने आपु जाय कि ऑपोजिट वाला जेटा को फ्यूज करचंदी वन इज माइक्रोस्पोर सेकंड इज मेगास्पोर वन इज मेल गैमेट सेकंड इज फीमेल गैमेट एंड हमने आपस से फर्टिलाइज करी कि दीटा हैप्लॉयड मिसी गोटे डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन करचंदी बुझिले रे दीटा हैप्लॉयड मिसी गोटे डिप्लॉयड फॉर्मेशन करचंदी आ से डिप्लॉयड प्लांट जो बनिला से फोन अगेन आगो जाके डिवाइड हिची और डिवाइड के डिप्लॉयड और हैप्लॉयड कन्वर्ट हिची if you look at the right side diagram you can see here is a beautiful example of a plant what a flowering plant ti achi flowering plant red flower ti achi this kind of flower is called as bisexual flower because bisexual ethipai kochi ethi both male and female present in a single flower can you see this a single flower is having both male and female clear akami kon koche bisexual flower boli koche bar scientific name he gala hermaphrodite कौन है ना hermaphrodite write it down our scientific name है गला but जो scientifically हम कौन कहते हैं को bisexual flower is also called as bisexual flower is also called as known as hermaphrodite yeah, I've already written in the chat box hermaphrodite अच्छा okay one tricky question is there पिला माने flower is bisexual but what about the plant कौन हबो as you can see this single flower is having both the pollen grains the anther and second the stigma the female part achi the male part with female part bhi achi the flower is bisexual but what about the plant a plant ko मैं कौन कहबी any one of you the flower is bisexual but what about the plant a plant कौन हबो
Anyone of you? ପିଲାମାନେ anyone of you ନା ନାଇଁ ନା କହିଦିଅ ନା ସାର୍ ଆସିବନି ବୋଲି पिंटू अरमान अविनाश आरके खंडवाल रामाजी हायर सेकेंडरी स्कूल शुभ्रांशु जनता हायर सेकेंडरी स्कूल रिसेंटली ज्वाइन कले आई गेस शुभ्रांशु आर यू देयर बेटा शुभ्रांशु Yes, sir. okay so can you tell it can you say it what is the plant called the No, flowers sir. are bisexual okay so let me tell you the answer hoji kono the answer hoji the plant is called as monoecious plant. The plant is called as monoecious plant. Two types of plants are there. One is monoecious plant, second is dioecious plant. Monoecious plant के monoecious plant जहाँ पाखे दीटा का sex organ अचंती. Mono means one. A single plant having two types of sexes that is called as monoecious plant, and it produces bisexual flowers. But dioecious plant के that means it is dita plant अलग अलग अचंती. ଆଉ ଗୋଟିଏ male ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ female ହେଇଥିବ that's what they are called as dioecious plant and the flower is unisexual in nature clear ବୁଝିହେଲା the flowers are bisexual the plant is called as monoecious ଆଉ ଯେହେତୁ bisexual flower they are also called as hermaphrodite hermaphrodite ର ମାନେ ହେଲା କଣ ଏଠି ଦିଟା କ sex organ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ present ଅଛନ୍ତି male ବି female ବି okay now another question which kind of pollination are you expecting over here which kind of pollination is going over here, taking part over here? Yes. Which pollination is occurring here? As you can see, the flower is bisexual flower, having both male and female gametes together. So Sir, can you self-pollination. self-pollination? Yes, good. It is called as self-pollination is the right answer. And self-pollination is one type hochi. The self-pollination is different type hochi. It is called as autogamy. Self pollination na eta ko type ra asibo autogamy ra answer asibo then self pollination we can call it as autogamy मन रखिलो the flowering plant जो अछि एटी एटी आ पाखरे मेल gametophyte बा pollen grain अछि female gametophyte ovary भितर अछि आ सेठी pollen grain माने से कोड पड़बे स्टिग्मा रे पड़िबे स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ता कामला हेट रिसीव करबा pollen grains को रिसीव कला पर लंबा होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर स्टाइल प्रेजेंट अछि और स्टाइल दे कोठी कासी पहुंचबो पोलिन ट्यूब दे की पहुंचो ओभारी पाखरे ओभारी भीतर अछि कैविटी कैविटर ना हैला लोक्यूल लोक्यूल भीतर अछि प्लासेंटा प्लासेंटा भीतर अछि न्यूसेलस भीतर अछि एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो सैक रे प्रेजेंट अछि तमरा के सिंगल एग सेल आ से सिंगल एग सेल को जाय फ्यूज करिवो के फर्टिलाइज करिवो के द मेल गैमेटोफाइट ता भीतर अछि पोलन ग्रेन आ पोलन ग्रेन अछि मेल गैमेट आ से द फ्यूज करिवो दिस इज द होल पाथवे होल सिनेरियो जो पार्ट हम तुम आगे डिस्कस करली ए पार्ट को मन रखियो बुझिएला जे कि जानि पाइल कोन हेछि आ से जो फर्टिलाइजेशन हे सरला परे यू कैन सी बाकी सब जिन झड़ी जाईछि केवल रही छि के से जो ओभारीटा रही छि ओभारी आगो जे फ्यूचर रे फ्रूट हबो आ ओभारी जो सीड से जो ओव्यूल थिला से आगो जे फ्यूचर रे सीड हबो यू कैन सी द ओभारी पार्ट टा केवल बाहर को रहिला ओभारी भितरे कि अछि तमर ओव्यूल ओव्यूल आगो जे सीड रे कन्वर्ट हेजिबो एंड ओभारी टा हेजो निजे गोटे फ्रूट टे तो फ्रूट भितरे सीड सीड पुनी आगो जर्मिनेट करिछि आ जर्मिनेट कर कौन बनै रही ना ऊपर को बनै प्लिम्यूल तल को बनै रेडिकल प्लिम्यूल रो बनिबो शूट रेडिकल रो बनिबो रूट आ जो प्लिम्यूल बा शूट फॉर्मेशन जो हेछि से आगो जाय कि गोटे नुवा प्लांट फॉर्मेशन करिवो गोटे जियोट्रोपिज्म शो करछि गोटे फोटोट्रोपिज्म शो करछि तो स्कूल ले पढितलो आलोकानुवर्तिता और ज्ञानुवर्तिता जे लाइट डायरेक्शन ने ग्रो करिवो दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म आलोकानुवर्तिता जे बे ग्राउंड को जाउछि बा जो पार्टी रूट टा जो अछि जे ग्राउंड को एंट्री करछि
away from the light, that is called as geotropism बोलते हैं हमें कहीं परिबा। तो गोटे बेसिक डायग्राम में तुम क्लियर हे पाइलो एठी तीनटा चारटा जिंस। फर्स्ट हला तांकर दी प्रकार लाइफ साइकिल शो करंती, गोटे हला तांकर हैप्लॉइड गोटे डिप्लॉइड बा गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट एंड दीटा पे भी परमानेंट नुंती अल्टरेशन जनरेशन हेथे। देन आज हैप्लॉइड अछि आ गोटे हैप्लॉइड सब डिप्लॉइड हे जिवि, डिप्लॉइड अछि फोन रिडक्शन डिवीजन करके मेसेज करी हैप्लॉइड हे जिवि, फोन नुवा बेबी प्लांट फॉर्मेशन हबो। Then एपट पार्ट तुम देख लो फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावर अच्छी, the flower containing both the sex organs male and female, that's why it is called as bisexual flowers or hermaphrodite flower. And the plant which possessing this flower is called as a monoecious plant. Mono means single and a single plant is having both the sex organ, that's why it is monoecious plant. And usually a monoecious plant or a bisexual flower, they usually possesses self pollination, so self pollination jaga me autogamy boli kohuche se pollination di korichi, clear. And pollination hoji kono na transfer of pollen grain from anther to the stigma is called as pollination. तो जो एंथर अच्छी हमारा मेल द पार्ट एंथर से तो बाहर लाके पोलेंस माने पे पहुंच ले कोटी स्टिग्मा, बट स्टिग्मा ना स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द अपकमिंग पोलेन ग्रेन्स। एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म में पहुंचला पर से स्टिग्मा कोन करिवो ना एठी चिन्हट करिवो whether this pollen is compatible or not. Please remember पिला माने एठी गोटे सेंटेंस से कहूचे मन रखिबो, pollination does not give guarantee for the transfer of right type of pollen grain to the right type of stigma. Repeating once again, सुन दिया उथरे, pollination does not give guarantee for the transfer of right type of pollen grain to the right type of stigma. So it is the stigma which has the ability, which has the capability to check whether the pollen is compatible or non-compatible. And if it is compatible, then it will allow it. If it is incompatible, it will reject it and it will destroy it. Simple answer. पॉलिनेशन किसी ग्यारंटी नहीं ना कि गोटे एमती स्टिग्माटी अछि, ये स्टिग्मा पर आसी पोलेन माने पडिले से पोलेन कहा बाटे आछंती, एआर बाटे आछंती, विंड रे आछंती, बा गोटे इनसेक्ट गोटे महुमाछी नै के आछि, गोटे हनी भी आनछि, गोटे किछि भी गोटे पानी बाटे आछन से माने वाटर दे के आसिले बा एआर दे के आसिले बा हनी भी आनिला बा ताको कोन से गोटे वेक्टर कैरी करके आनछि। तो इज देयर एनी गारंटी कि एई जो प्लांट रो स्टिग्मा रे जो पोलेन ग्रैंड पडिछि से पोलेन ग्रैंड सब ठीक हेतियो बोली say type of बोली? There is no guarantee. That's why I told you pollination does not give guarantee for transfer of right type of pollen grain to right type of stigma. Remember this topic. And second part of the it is the stigma which has the capability, which has the ability to check whether the pollen is compatible for me or not. If it is compatible, then it will allow it for germination. If it is incompatible, it will reject it. Mana kar do, pada etu clear? से वाला जिंस होची पोलेन पडिला आ जेतु जेटा सेम फ्लावर को बिलोंग करूची, सेम टाइप ऑफ स्पीसीज को बिलोंग करची, तो ये तो जानि छि तो मोर जिंस ये तो अलाउ कला आ अलाउ कला तो कोन बनिला गोटे पोलेन ट्यूब टी फॉर्मेशन हे कि पोलेन ट्यूब टी एंट्री करची कोठी कि ना स्टिग्मा रु गला स्टाइल को, स्टाइल रु गला ओवरी को, ओवरी भीतर अछि तार लोक्यूल, लोक्यूल भीतर अछि प्लासेंटा, प्लासेंटा रे प्रेजेंट अछि ओव्यूल, ओव्यूल रे अछि न्यूसेलस, न्यूसेलस तो गोटे सेल टी कन्वर्ट हे जाय जे मेगास्पोर मदर सेल, से जाके डिवाइड करी बने चारिटा मेगास्पोर, तीनटा हे जिवे डिजेनरेट, गोटे रहिबा फंक्शनल, से फंक्शनल मेगास्पोर आगु जाय कि डिवाइड करी कि 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक रे कन्वर्ट हबो। आ से एम्ब्रियो सैक भीतर के प्रेजेंट अछि नंबर सिंगल एग सेल टी प्रेजेंट अछि। से सिंगल एग को फ्यूज करिया पई कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन आस्ते, तार भीतर जे लकीएस्ट पोलन ग्रेन थिबो से ही मेल गैमेट को पठेबो एंड से जाके आपस में फ्यूज करिवे। तो जो एग अछि दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर, जो पोलन ग्रेन अछि दैट इज अगेन हैप्लॉइड इन नेचर। And when two haploid gametes fuses together, then formation हेछि गोटे डिप्लॉइड जाइगोट। और जो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन हेछि, तो डिप्लॉइड जाइगोट आगु जाई गोटे एम्ब्रियो रे कन्वर्ट हबो। आ एम्ब्रियो आगु जाई कि गोटे बेबी सीट टे बनेबो, और से बेबी सीट जर्मिनेट कला परे ऊपर पार्ट को बनेबो प्लीम्यूल, तळ पार्ट को बनेबो रेडिकल। प्लीम्यूल आगु जाई कि से टर्मिनेट करबो गोटे सूट रे, रेडिकल टर्मिनेट करबो गोटे रूट रे। तो रूट हे गला, सूट हे गला। तुम जानते हो फ्लावरिंग प्लांट दुईटा पार्ट अछि, गोटे रूट सिस्टम गोटे सूट सिस्टम। रूट सिस्टम माटी तले एंट्री गला, और सूट सिस्टम ऊपर फ्लोरिश करके गोटे ब्रांचेस बनेला, लीव्स बनेला, बर्ड्स बनेला, फ्लावर्स बनेला, एटसेट्रा एटसेट्रा।
Now, all clear till this? Shall I move ahead? Yes, sir. Okay. Now, here comes some question to solve. The main plant body of a bryophyte is gas. एक क्वेश्चन आंसर करिके हम आंसर दे परिबा. Main plant body तमने पर एठी मो फोन रे चेक कर परिबे के आंसर देला बोली. The main plant body of a bryophyte is basically gas. Haploid, diploid, by haploid sporophyte, by haploid gametophyte, diploid sporophyte, or diploid gametophyte. Sir, haploid gametophyte. Yes, correct answer is haploid gametophyte. Correct. The first answer is haploid gametophyte. Party. Let me annotate for all of you. This is the correct answer. Haploid gametophyte is the correct answer. Question number 2. In pteridophytes, the prothallus represent dash. Prothallus ro mane kona? Previous question, itu details se padhiba. ମୁଁ କହିଦଉଛି what is prothallus? ଏ ଯୋଉ word ଅଛି prothallus, ये prothallus ହଉଛି କଣ ନା these are green, these are multicellular, these are haploid, these are thallus-like structure present in a bryophyte. ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ haploid କହିଥିଲି haploid ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ କଣ ହେଇଯିବ it is a gametophytic generation. आगु जाई पढिबो पार्टी देखिबो ना प्रोथैलस कोड फॉर्मेशन हबो ना हम ब्रायोफाइट्स केस तुम जानिबो केमती प्रोथैलस टी फॉर्मेशन होची सेटी गोटे हैप्लॉइड स्पोर टी बनी हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन हबो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइटिक जनरेशन. अगेन मु तुम कहली मु एटी तुम प्लांट किंगडम इंट्रोडक्शन दोची बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ना એટલે एंट्रेंस क्वेश्चन कोठो आसीबो एंट्रेंस से कहबो ना एटा दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू क्लासिफिकेशन बोली. So this question can be from biological classification, this question can be from plant kingdom. सेटु के आस्परियो तोडा प्लांट किंगडम रे क्वेश्चन थिला मन रखिबो टेरिडोफाइट रे प्रोथैलस ना हैला कोन गैमेटोफाइटिक जनरेशन. एंटायर टेरिडोफाइट कोन हे गेला स्पोरोफाइटिक. टेरिडोफाइट जो अछि से बेसिकली स्पोरोफाइटिक इन नेचर रहबो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. देन सेटु गैमेटोफाइट जनरेशन के बनछि प्रोथैलस बनछि. Now the term seed habit, question number 3, is seed habit is associated with which major plant group? Gymnosperms. Yes, seed habit टा हमर जिम्नोस्पर्म रो स्टार्ट हैला. Gymnosperms, sir. आउ बन रखियो precursor of seed habit पिलेमनी तो pteridophyte अछि that is called as the precursor of seed habit. Precursor, let me write for you, it is called as precursor. ओ पाखे जो पेंटिंग नाही बेठी माउस रे ही लिखुची, so you can see how much I am struggling for you. आज स्टूडेंट्स माने जज करछन कि सर को हैंडराइटिंग के इतने खराब इतने लिखछन. तो प्रिकर्सर हे गया कि जेमते एंसेस्टर हमें कहू कि सीड हैबिट रो प्रिकर्सर के रहिला ना टेरिडोफाइट्स माने रहि 8 में स्टार्ट हेतिला बट एक्चुअली सीड आसिला कोठी जिम्नोस्पर्म माने बाय फास्ट आसिला. जिम्नोस माने हेला नेकेड एंड स्पर्म्स माने हेला तारा सीड्स. Now, which of the following is not a characteristic feature of gymnosperm? Gymnosperm characteristic feature case in no abitaro. The presence The of main vessels in phase. the island. Yes, good. 8 years like not like माने कोटा तो ठीक नुहे कोटा भूल अछि गोटा presence of vessels in xylem. आकर vessels part रे xylem न थाए. Xylem कोन थाए एडी न थाए. Xylem कोड स्टार्ट हैला. Xylem started from muscular bundle origin कोड हेतिला तमर टेरिडोफाइट स्टार्ट हेतिला. Naked seed, yes, gymnus माने naked, sperm माने seed तो इटा करेक्ट अछि. Then heterosporous nature, yes, आंका पाखे स्पोर जो अछि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर अछि. हेटेरो माने डिफरेंट आउ दी प्रकार स्पोर गोटे होमोस्पोरस गोटे हेटेरोस्पोरस, दे आर हैविंग हेटेरोस्पोरस. देन डोमिनेंट स्पोरोफाइट, yes, तांकर जो लाइफ साइकिल रो मेजॉरिटी पार्ट राइट. तो तीनटा का करेक्ट अछि कोटा भूल अछि. आंसर इज प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम. नाउ ए क्वेश्चन दा सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 5. डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट, right? Gymnosperm, angiosperm. Yes, the correct answer. Angiosperm. मन रखिबो angiosperm plant रे दी तरह fertilization होता है, that is called as double fertilization and triple fusion. मन रखिबो जो मेल गैमेटोफाइट थिला pollen grain, से pollen grain ने थिला दीटा मेल गैमेट. Out of the two male gamete, one will go and fuse with the female gamete, that is the egg cell, that is called as syngamy, that is called as true fertilization.
second जो male gamete थिला it will go and directly to the polar nuclei, the center of the polar nuclei तापर से पहुंचीबो and सेठी देखो जे fuse करिवो. This kind of जो fusion is called as triple fusion. तो जेरो दी थर fertilization है जी, first with the egg cell, second with the polar nuclei, as two fertilizations are occurring simultaneously, that's why it is called as double fertilization. Remember this part. Clear? Then the double fertilization, this is a unique feature only and only present in case of angiosperm. The first fusion is called as syngamy by amphimixis. Second is called as apomixis. जोटे हमने केम फ्यूज हेइना आंदी सेमन टू फर्टिलाइजेशन हेइना आंती गोटे पोलर न्यूक्लियस सहित आ गोटे मेल गैमेट रे मिस जाईची. फर्स्ट फ्यूजन फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बनिबो जाइगोट बा एम्ब्रियो करिवो. सेकंड फर्टिलाइजेशन मिलियो कोन तमरो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हो. रिमेंबर दिस थिंग. बने रहिला जानि पाइलो. Yes, sir. No. There is a second question. The heterosporous rhodophyte that often act as biofertilizer. Actual question. Biofertilizer किए आसे. Question number 6 रे. पिले माने basically biofertilizer जो word ऊपर focus करिवो. Bio living fertilizer माने ला कोना जे fertility provide करूची soil को. Sir, Ajola. Yes, azolla is the correct answer. How do you know azolla is the correct answer बोली? Sir, एटा आगुरु मु पढिछि. Okay. Biofertilizer. ओके. तो बायो फर्टिलाइजर करेक्ट आंसर होची एजोला. हम यूज करथाउ ये जाई सेटी यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ाई दे, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन को फॉर्मेशन को बढ़ाई दे आस्ते. इक्विसेटम हबनी, साल्विनिया हबनी, मार्सिलिया हबनी. ये फैक्चुअल क्वेश्चन आदर के कांसेप्ट आसबनी. In which group of plants are the gametophytic phase and the sporophytic phase independent and free living? जेटा को इंडिपेंडेंट होचने अलग अलग रहउचनी. गैमेटोफाइट भी स्पोरोफाइट भी. Answer is Pteridophytes. yes, pteridophyte Option is the B. correct answer. Option B, pteridophyte is the correct answer. काहेकि ना sporophytic टा majority रहिबो, diplontic life cycle से माने शो करंती. आकर majority part of the life is sporophytic. बहुत कम टाइम में से माने gametophyte हेते हैं, जेमति कि प्रोथैलस कथा हेला. But both are free living. के का पे dependent होंती. In case of bryophytes, the female part जो थिला तार female जो आर्किगोनियम थिला से आर्किगोनियम ऊपर डेवलप करथिला के फूड सिटा कैप्सूल जे पढिछि से बुझी परिबा पार्टी जो माने प्लांट किंगडम स्कूल ले बा कॉलेज रे बा तमे सेल्फ स्टडी करिछ पढिछ तो माने मन पकई परिबा. ब्रायोफाइट केस रे कोन होतिला आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल थिला एंथ्रिडिया जो एंथ्रोजॉइड्स फॉर्मेशन करिवो, फीमेल पाके थिला आर्किगोनिया से सिंगल एग टे बनेइबो. से एंथ्रोजॉइड्स माने वाटर रे स्विम करिके आसी आर्किगोनियम रा माउथ रे पहुंचीबे, ताकू जे फ्यूज करिवे और फ्यूज कला पर बने जो जाइगोट टी. जाइगोट आगो जाई कन्वर्ट हे जो स्पोरोफाइट रे. और स्पोरोफाइट तीनटा पार्ट थिला, वन इज फूट, देन सिटा, देन कैप्सूल. और एठी जो हमर फीमेल गैमेटोफाइट टी बनिची, ए जो स्पोरोफाइट टी बनिची सी फ्री लिविंग नुए, एकुटे चली परिबो नै. से डिपेंड करि कि रहतला का पर फीमेल बॉडी पर. माने हमन केस देखु ना, हमन केस रे ह्यूमन बीइंग केस रे मेल द स्पर्म इजेक्ट कला कोटी वजाइना भीतर, female the vagina भितर male the sperm to ejected, that is called as ejaculation. और से सीमेन बा sperm जो थिला से एबे जाइंकी मूव करी पहुंचे जी कोटी fallopian tube रे एम्पुलास्टिमिक जंक्शन में सेठी पहुंची कि से जो सिंगल एग सेल दी थिला ताको से फ्यूज करी कि जाइगोट बनेला. और जाइगोट आगो जाइंकी कोन कहला ना ग्रो कला, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला फॉर्मेशन करे कि क्लीवेज करे कि पहुंचबो कोठी ना हमर पहुंच गेला यूटेराइन वाल पाखे. यूटेरस रो वाल जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ता पाखे पहुंच जिवो. सेठी पहुंचला पर सेठी इम्प्लांट हबो, सेठी से जमी की रहिबो. और इम्प्लांट हला पर सेठी अबिका एंडोरे ग्रोथ हवा स्टार्ट हबो. तो एठी जाइगोट बढिला पर संगे संग बाहर पळे आसुनी, से डिपेंड करूची कहा पर फीमेल बॉडी ऊपर. तो इन दिस केस दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट इट इज इंडिपेंडेंट इन नेचर. मींस सर गैमेटोफाइट अलगा रहिबो, स्पोरोफाइट अलगा देबो, केही का पर डिपेंडेंट मानते मन रखियो. तो जाइलेम्स इन जिम्नोस्पर्म्स lack gas तबे कौन न थाए? Sir, vessels. Yes, they do not have vessels. They are having tracheids commonly रहिबो, sieve tubes commonly रहिबो, xylem parenchyma commonly living. Vessels नहीं, vessels का पार्ट पड़े सो vessels पड़े सो ठीक phloem case रे. Now the haploid structure in a flowering plant that nourishes the developing embryo.
এটা মনে রাখিব the haploid part Sir, endosperm. ହଁ ଟ୍ରିପ୍ଲୋଏଡ ମାନେ क्वेश्चन ଟିକେ ଭୁଲ ଏଠି ରହିଗଲା এটা haploid ହବନି ରେ এই ପାର୍ଟଟା ସରି ଫର ଦ ମିଷ୍ଟେକ୍ ये haploid ହବନି ହବ triploid kindly cross check it is not haploid it is triploid endosperm ହେଲା nourishing ठीक ଅଛି but endosperm is triploid in nature प्रिंटिंग मिस्टेक माने जो टाइपिंग एरर हो जाइए से ऑटो करेक्ट टाइप पे किछ हो जाइए ट्रिप्लॉइड हबा TRIPLOID कहीं ना एठी हमर गोटिए हैला हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड ता सहित आसिला दीटा पोलर न्यूक्लियस दैट्स व्हाई इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर दीटा पोलर न्यूक्लियस फीमेल पार्ट ता सहित गोटे हे गला मेल पार्ट और जेहेतु गो वन इज मेल टू आर फ्रॉम फीमेल और 1 plus n is equal to 3 so triploid হবে haploid no this is a triploid और triploid structure in flowering plant केवल angiosperm बना पे देखा जाए the triploid structure in flowering plant that nourishes the developing embryo खाइबो के रहउची ता ना हैला कोन endosperm endosperm again three types रो अछि तीन प्रकार endosperm अछि कोन कोन one is your free nuclear endosperm second is your cellular endosperm third is your halobial endosperm last question plant kingdom then हम animal kingdom start करियो introduction which of the following is a correct pair as correct तुम के लागुची question number 10 तुम आगे अछि correct pair की हबो sphagnum vascular plant chance नहीं pinus bicarpal flower chance नहीं कारण pinus हे गला के gymnosperm पाखरे flower नहीं तो ये हैला wrong Silaginella homosporous no Silaginella Sir, heteros option A. yes correct answer is option A C भी हबनी sphagnum जो अछि vascular plant से नुआ vascular plant like ये pteridophyte sphagnum belong करछि bryophytes को दैते हबनी option A हो जे cycas and it is dioecious माने कोन आर male part अलगा female plant अलगा जेमते अमृतभंडा हे गेला papaya plant papaya is a dioecious plant देख तो किछि किछि भंडा अमृतभंडा गछ देखितो तमे papaya plant देखिथिबो जोटी flower तो हेची हेले fruit हेनी तामाने कोन that part is a dioecious plant and the dioecious plant is a flower is that is a male flower से को flower is male flower the male flower तो of course fruit बनै परिबो नै जे female flower अछि ता पाखरे ओभारी अछि आ ओभारी आगो जे fruit रे कन्वर्ट हबो एटा मन देखो साइकस प्लांट अला dioecious plant और male and female are different डेटा अलग अलग हिक अछि करेक्ट तो हमर टिल नाउ हमें 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दिला एंड सब जगह तमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसी सब जक ऑलरेडी तुम AIPMT नीट जो 2012-13 AIPMT हो गला 19-20-23 जो आसिला नीट क्वेश्चन ता सहित OUT क्वेश्चन मिसिक आसी सब जक all of these questions are already asked previously in your entrance examination all of them now let's quickly move to the next segment that is kingdom animalia एबे जबा कोठी kingdom animalia part को जबा animalia you all know kingdom animalia आको हमें animal kingdom बोले भी कहूचे तो now you can see animal kingdom ए animal kingdom रे बहुत सारा जिंस अछि सबटो लार्जेस्ट kingdom दा देखिबा animal kingdom ही देखिबा और animal kingdom रे गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सॉरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो माने अछि तांकोड स्टार्ट करी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आहुरी बॉडी की ऑर्गन सिस्टम लेवल देकी जाई परिबो बट सेलुलर लेवल लो स्टार्ट करी कि सेलुलर देन टिश्यू लेवल देन ऑर्गन लेवल देन ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं ऑर्गेनिज्म जाई भी जाई परिबो एनुअल किंगडम so what are animals animals are basically multicellular heterotrophic eukaryotic organisms without a cell wall these are multicellular that means they're having multiple cells in them they're heterotrophic that means they cannot produce their own food for themselves they have to depend upon others they are depending upon others to get their food they are eukaryotic organisms that means they are having true nucleus they're having membrane bound cell organelles in them and one difference is that they do not have a cell wall and by corner cell wall here they do not have a cell wall and they are heterotrophic in nature that means they cannot produce their own food they lack chlorophyll molecule and they are depending upon others they can be parasite they can be saprophyte they can be holozoic they can be predator so predation भी कर शिकार करके भी खाई परिबे and you can see this planet is having so
numerous type of animals. Can you name a few? This blue color elephant, what is the scientific name of it? Can anybody tell me what is the scientific name of elephant? हाथी मेरा साथी, हाथी का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? Elephant scientific name is Elephas maximus. मन रखियो, Elephas maximus. Okay, what is the scientific name of buffalo? This is my personal favorite. What is the scientific name of buffalo? Buffalo scientific name कौन? Its name is, let me write it for you. Bubalus bubalis. Scientific name of buffalo is basically Bubalus bubalis. जेतले हम टाइप करिबा ताकू केमते टाइप करिबा, इटालिक्स से टाइप करिबा, यस और नो, इटालिक्स से रखिबा, जीनस एंड स्पीसीज रो नेम अलग अलग रहइबो, जीनस रो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल रहइबो, रेस्ट ऑल विल रिमेन स्मॉल. बिंग अ टीचर म काम तुमको सबले रिमाइंड करै देबा कि ए पार्टी ध्यान रखिबो. साइंटिफिक नेम देखला बेले दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया. ओके, चलो पढिबा एनिमल किंगडम रो किछ बेसिक थिंग्स. So they directly or indirectly depend on plants for food. What is the meaning? Directly, indirectly माने कौन? Now some are herbivores, some are carnivores, some are omnivores. जो माने herbivores होइले, those are called as herbivores, like the goat, like the sheep, like the cow over here, or like the panda. तो एमान सब हो गले कौन? These are herbivores. माने plant पे depend करछन. ये साइड जो animal टी अछि, जो human being टी अछि, तर हमें anatomy show करी देखुचे, ये human being जो कोथे omnivorous category. Omnivorous means से निज food निजर बनै पारुनी, से अन्य को डिपेंड करछि. डायरेक्टली प्लांट को जदि खाइबो हर्बिवोर्स ही परिबो, एनिमल खाइले कार्निवोर्स ही परिबो, और जदि बोथ करछि दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओमनिवोरस. Now they digest their food in an internal cavity and store the food reserves as glycogen or fat. से तांको food को glycogen बा fat रे store करके रखि परछन्ती. And they digest their food in an internal cavity. तांको cavity भीतर ताको store करछन्ती, save करछन्ती. The mode of nutrition is holozoic in nature. केमता nutrition रहिबो? Holozoic. Holozoic means कौन? Ingestion of food. So the food को completely ingest खाली. Holo means complete. मन रखिबो. The word holo means complete. The word holo means total. Completely. So the food complete. एमती नहीं जे partially pattern खाई, partially बाहर को पड़ते सेमती नहीं. Completely the digest भीतर को नेबे. The food टिक over entry करछि from the starting from the mouth. Mouth is जो कोटिंग तंका food pipe that is called as esophagus. Esophagus जे कोटिंग जीव stomach. Stomach रे कि अछि ना acidic pH अछि. से acidic pH presence रे से जो हमर food टी अपने decompose होबा start करियो, भांगिबा start करियो. Then सेडु जीव small intestine. Small intestine ने आउ जो बच्चा को जो पार्ट तो से digestive जो pepsin, trypsin हार्मोन जो digest कराई गेला. Then से जो large intestine जो से absorption हैला, जो waste material सब absorb ही जीव कि वेस्ट भीतर जो मेस्ट पार्ट दरकार ताको एब्जॉर्ब करा हे जो देन बाकी जो बच्चा को पार्ट रहला से तुम ह्यूमन वेस्ट एक्सक्रीटा हे के बाहर जो दैट यू नीड टू रिमेंबर that they directly indirectly depend on plants for food. They digest their food in the internal cavity and store food reserve as glycogen or fat. Them the plant mane now food को store करछनी in the form of, who can answer this question? The starch. Yes, good. Starch. What is a starch? What do you mean by starch? Carbohydrate. Carbohydrate is a very basic answer. Can you tell me in detail starch कौन हबो? Carbohydrate को part जीवो like the monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide, polysaccharide. Starch is a dash monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide, polysaccharide. कुछ रिजिम. Remember, starch is a polysaccharide. Yeah, starch is a polysaccharide. Let me write it for you. Starch is a homopolymer of glucose. Homopolymer of glucose. What is homo? Homo means what? Homo mane hela same. Homo mane hela same. Polymer mane hela poly mane hela mini. Mer mane hela unit.
तो बहुत सारा ग्लूकोज आपस में मिसिकी फॉर्मेशन करछन गोटे स्टार्च को विचरे को बॉन्ड अछि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करिके ग्लूकोज 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 मिसिकी बनेछन स्टार्च जेमति प्रोटीन हो गोटे हेटेरो पॉलीमर सेठी कि अछि प्रोटीन का को नै बनिछि अमीनो एसिड्स नै बनिछि ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स और bunch of amino acids joined together through peptide bonds to make a polypeptide chain is called as your protein. But सेठी जो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स अछन दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स अछन क्लियर बट स्टार्च रे सेम टाइप रो मोनोमर अछि दा ना हेला ग्लूकोज तो ग्लूकोज 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 मल्टीपल टाइम मिसिक स्टार्च हे की फॉर्मेशन हे जंदी तो स्टार्च इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड स्टार्च इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसैकेराइड ये कोडी पडिबा बायोमोलिक्यूलर चैप्टर कार्बोहाइड्रेट पार्ट हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप देख परिबा तो प्लांट्स माने ग्लूकोज फॉर्मेशन करले स्टार्च कन्वर्ट करले कैन यू टेल मी व्हाई if they are producing glucose or if you ultimately need glucose then why they are converting that glucose into starch what is the need what is the necessity if you require glucose then what is the need to store it in the form of starch any answer to this question long term. for long-term storage anything Yes. else Avinash kindly participate Arman Sukruli Higher Secondary School Mariband Subhanshu Sekhar Ramaji Higher Secondary School Gayatri Smruti Subhanshu Yes, only sir. for long term question is ki if plant produces glucose and we ultimately require glucose then what is the need of storing that glucose in the form of starch ଯଦି ମତେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବନେଇ ପାରୁଛି ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗ୍ଲୁକୋଜ ବନାନ୍ତା ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ନିଅନ୍ତି ବଟ୍ ଇଜ ଦ नीड ऑफ कन्वर्टिंग दैट ग्लूकोज इनटू स्टार्च कौन ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟୋର କରୁଛି स्टार्च ଆଗ ତମେ ଏମିତି ବୁଝି ପାରିବ କି वी रिक्वायर मनी एंड हमको माने जो काम कले बा जो क्लास कले हमको मनी मिलियो पैसा मिलियो बट से पैसा को मु कोन करिवि दैट सेही फॉर्म में न रखे कि आई कैन इन्वेस्ट दैट मनी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड in the form of a property in the form of shares ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ତାକୁ ଏବେ ସେ ମନି ଟାକୁ इन्वेस्ट कर दिए इन्वेस्ट करा द्वारा कौन हैला ना जब से प्रॉपर्टी ର वैल्यू बढ़िला से मनी ର भी वैल्यू बढ़िबा स्टार्ट हो गेला जो गोल्ड ର प्राइस बढ़िला मनी ର प्राइस भी बढ़िला येला फर्स्ट थिंग सेकंड से स्टोर एक रहला लॉन्ग टर्म नेकी देन स्टोर हे पाइला कॉम्प्लेक्स फॉर्म को पळे आसला पैसा आज अछि इन्वेस्ट जो पाखे अछि खर्च होई जिवो हेले जमी जो अछि ता खर्च करी होबनी कारण से रहिला सेठी स्टोर हे जेबे अति इमरजेंसी आसो तमे तो बिक्री कर परियो स्टोर कर ये कर परियो तो ठीक से बोले आईटी प्लांट बने दिला ग्लूकोज बट से ग्लूकोज को लॉन्ग टर्म जे से स्टोर करिवो तो से रखियो चाहू जे से ताको पॉलीसैकेराइड करतबो जो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज बनेतिला ताको से कॉम्प्लेक्स फॉर्म पॉलीसैकेराइड करतबो एबे गोटे एग्जांपल देव सहज तुम बुझी जिवो जेमति कि जो गाई एक देइ से हम फोटो देखुछो गाई रो फोटो देखुछो से गाई देबो क्षीर मिल्क देबो ए मिल्क को हम केते दिन स्टोर कर पारिबी I can store that milk for 1 to 2 days. गोटे दिन दिन से क्षीर को रखी पारिबी बट इफ आई कन्वर्ट दिस मिल्क इनटू कर्ड दही को कन्वर्ट कर देबी देन आई कैन स्टोर इट फॉर लाइक 10-12 days if I convert this milk into paneer again I can store it for 3-4 days तो स्टोर कर पारिबी बट इफ आई कन्वर्ट दैट मिल्क इनटू घी तो जदी घी रे कन्वर्ट मु कर देबी नाउ आई कैन स्टोर दिस घी फॉर इयर्स आफ्टर इयर्स तो 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष रखी पारिबी किछि भी हार्म होबो नै बट जिंसो हे जे कोन ना मिल्क जो थिला छोटे सिंपल पार्ट थिला घियो हे गेला कॉम्प्लेक्स पार्ट क्लियर तो इट से बोला जिंसो मु आई कैन ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क बट आई कैन नॉट ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ घी गोटे ग्लास घियो एकाठे पी पारिबी नै बट मिल्क मु कंज्यूम कर पारिबी तो प्लांट प्रोड्यूस करछि ग्लूकोज बट व्हेन इट कम्स टू स्टोरिंग ऑफ दैट ग्लूकोज इट स्टोर करछि इन द फॉर्म ऑफ
starch in the form of a polymer, homopolymer of glucose, that is called as starch. In case of animal, हमें खाइबा खाइकी खाइबा को simplify कले in the form of glucose, but से glucose को हमें store करचे, reserve करचे in the form of glycogen or fat. Now again my one question is here, like who converts glucose into glycogen and where it converts? My question to all of you, who converts this glucose into glycogen? Go ahead. Sir, animals. Animals, but के animals से को पार्टी करूची आम बॉडी जो ग्लाइकोजन बनिची, who converts the glucose into glycogen? Who converts this? Sir, liver. No liver, liver तो no. But a hormone टी. There is an hormone. But a hormone टी अच्छे से hormone टी कौन करते हैं ताकि convert करते हैं. What is the name of that hormone? It is linked with diabetes. Now I can tell the name of the hormone. It is already linked with diabetes. Antidiuretic hormone. No, no antidiuretic hormone. That is insulin. Pancreas produce करिथाए insulin. और insulin ना काम हला कौन से blood sugar को control करिबो, blood sugar को manage करिबो. Insulin is like a key. जो की रा काम हला कौन ना जब cell को glucose दरकार अछि, glucose cannot directly enter into the cell. You know very well, dear students, जति जणा क्लास रे attentively सुनुछ समस्त बुझेई कहूची, आम बॉडी को दरकार एनर्जी बनिया पाई कि we need sugar, we need food, sugar दरकार हम ग्लूकोज दरकार. ये जो ग्लूकोज अछि, that glucose cannot directly enter into the cell because cell पाखरे अछि cell membrane. The cell चारिपटे सराउंड करि अछि cell membrane or plasma membrane. The plasma membrane is semi permeable in nature. It won't allow each and everything to directly come inside. That is semi permeable. जे कहा को allow कर समस्त को allow करिबो नहीं, selectively allow करिबो. But से ग्लूकोज को भी allow करनी. तो ग्लूकोज को सेल को एंट्री करे हेल्प करूची कि who helps glucose to enter into the cell? The answer is insulin. Insulin is the key. जो key टी ऐसे bind हुए सेल ऊपर और सेल ऐसे channel टी पे open है जिबो and glucose can directly enter into the cell. But जेतिके सेल को दरकार सेतिके ग्लूकोज एंट्री करिबो, rest of the glucose will be stored in the blood only. But जब blood रे ग्लूकोज concentration बढ़ुची और सेल रिक्वायरमेंट पूरा ही सारलेनी, तो जो रेस्ट बड़का ग्लूकोज अछि ताकू हम इंसुलिन कोन करियो कन्वर्ट कर देबो इनटू ग्लाइकोजेन बा द रिजर्व फैट बोली हम कहि परछे. तो देखा जे आज अधिक खाई देछि, मे भी काले कि से स्टार्वेशन करि पारे, काले खाइबा न मिली पारे, सेति पाएंगे से ताकू स्टोर कर रखितला इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन बा फैट बोल तो कहि परिबो. तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन रे कन्वर्ट करूछि किए? व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन? ता ना हला इंसुलिन. ଆଉ ସେ ଇନସୁଲିନ ବନୁଛି କୋଉଠି? ତ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଜ. ସେ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ନାଁ ହେଲା ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଜ. ତମେ ଦେଖିବ ୟେଲୋ କଲର ଦେଖେଇଛି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋମାକ ର ଜଷ୍ଟ ତଳେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଜ. ଆଉ ପ୍ୟାନକ୍ରିଆଜ ରେ ପୁଣି କିଏ ବନଉଛି ନା ଆଇଲ୍ସ ଅଫ ଲାଙ୍ଗେରହାନ୍ସ. ତା ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ପୁଣି ବିଟା ସେଲ୍ସ. ତ ଲେଖିପାରିବ ଏଠି ଆମର କିଏ ବନଉଛି ଇନସୁଲିନ? ବିଟା ସେଲ୍ସ ଅଫ ଆଇଲ୍ସ ଅଫ ଲାଙ୍ଗେରହାନ୍ସ of pancreas endocrine gland. It produces insulin. Beta cells of islets of Langerhans of pancreas endocrine gland. ये बनो जे insulin जहाँ काम हो जे. Now let's move quickly to the next segment. That is जो animal kingdom माने अच्छे से माने this have a definite growth pattern. ये माने हमने जीवन जाकर हमने grow करीबन ना definite growth pattern गोटे अच्छी and grow into adults that have a definite shape and definite size. ठीक है पिला माने तम पार्ट को तीनटा पार्ट रे डिवाइड कर परिबा. गोटे हला हमर अर्ली चाइल्डहुड, देन गोटे हला यूथ आ गोटे हला ओल्ड. ए जो अर्ली चाइल्डहुड रे कोन हितला ना तमरो ग्रोथ रे तम नंबर ऑफ सेल डिवीजन अधिक होतिला, तुम बहुत जल्दी ग्रो करी गला. भाभी देखिबो गोटे
जब तुम जन्म होइतिल तुमर साइज छोटियाटे थिला तुम वेट कम थिला 2.5 किलो 3 किलो भलिया वेट तुमर थिला बट एबे तुम से वेट रो एक्युमुलेशन करके 30 किलो 50 किलो 60 किलो 70 किलो भी हे परिबडी क्लियर तो एई जो वेट टी बढ़ुची मल्टीपल टाइम 3x 3x 10x 20x वाला तो मल्टीपल करची बट ये कोन एमती कंटिन्यू कर 100 किलो 200 किलो 5 किलो हिजबो की ना छोटे पर्टिकुलर ग्रोथ जेंगी ताठू अधिक ओभरवेट हे परिबो नै तो 500 किलो तो हे ही परिबो नि केबे सेमती हाइट जो हे गला हाइट तुम जन्म थिला बेले जो छोटे पिलेटी हेतिला ए जो 1 फुट 2 फुट हिसाब रे थिला देन तुम 3 फुट हेलो 4 फुट हेलो 5 फुट हेलो 6 7 मैक्सिमम जाय परिबो से 10 फुट हे परिबो नै ताड ओदे जाय परिबो नै गाइगेंटिज्म शो कर परिबो नै so they have a definite growth pattern and they grow into adults that have a definite shape and definite size. Clear? Our one properties ଅଛି that these are higher forms so sensory and neuromotor mechanism. ଆମ ପାଖରେ sensory organ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ neuromotor mechanism ଅଛି ଆମ neurons ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣି ପାରୁଛେ ଆଉ ଯୋଉ sensory organ କହିଲି କିଏ ଆସିବ ନା hearing ଗୋଟେ ହେଇଗଲା sight ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛେ ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛେ we can smell through our nasal chamber we can touch the thing and we can know whether it is hot whether it is cold or how it is rough or it is smooth ଆମେ touch କରି କହି ପାରୁଛେ and ହେଲା taste हम जान पार्चे whether it is bitter whether it is sour whether it is salty whether it is sweet हम तो जान पार्चे taste करी these are the five indriyas the hearing the sight the smell the touch the taste ताको हम neuromotor ବା sensory organ बोलसी कहि परिबा ना ये गला animal मानन पाए देखा जाय जिंसटी and most of them are capable of locomotion animal can do one thing that is called as locomotion what is locomotion they can voluntarily move from one place to another place ठीक है right now I am doing movement yes or no I can do movement my hand movement I can do nod my head but movement करछि but what is locomotion locomotion is from transferring from point A to point B गोटे जगह आउ जगह को जाई पाइल that is called locomotion remember one thing all locomotions are movements but all movements are not locomotion क्लियर सब जगह लोकोमोशन कौन हे परिबो मूवमेंट हे परिबो तो सब जगह मूवमेंट ता लोकोमोशन हे परिबो नहीं द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल followed by embryological development the sexual reproduction की होती that is due to copulation and what is copulation is called as a sexual intercourse which is done between a male and a female to produce a diploid zygote diploid embryological development ପାଇଁ कि ଆମେ जो पार्टी करते that is called as copulation male and female copulation करिवे sexual intercourse करिवे then only जाइन zygote formation हबो animal kingdom रे एया ही प्रथा रहिछि ए जे बुझि पाइला understood Subhranshu Avinash Gayatri Yes, sir. okay Yes, sir. now the next segment comes here what is an animal and animals are multicellular heterotrophic organisms without cell wall and without chlorophyll I have already told you this thing securely यार पीडीएफ मिलेगा कि yes definitely बेटा मु ए पीडीएफ शेयर कर देबी डीएचसी काउंसिल ऑफिसर्स मानक सहित एंड सेठू तमे शिक्षा ज्योति पोर्टल ले पाई जिवो बा यू कैन डायरेक्टली आस्क टू योर नोडल ऑफिसर्स दे विल हेल्प यू दे विल गाइड यू हाउ टू गेट दैट पीडीएफ आर पार्ट तुमको डेफिनेटली शेयर कर देबी जो डीएचसी मेंबर्स अछनी तांको नोडल ऑफिसर को पठै देथिबी then yeah the set to knowledge शिक्षा ज्योति app portal you can directly get the pdf animals are multicellular animals are heterotrophic organisms and they do not have a cell wall and they do not have chlorophyll देखला तो समझ तुम चिन्हित ना काहा को चिन्हि ना सभा लास्ट की अछनी हमर जेजे अजंग अजा कौन ताका ना monkeys Monkey. macaca mulata then asila tiger the king of the jungle yes then asila tamar eti house sparrow घर चटिया हाउस स्पैरो आसीगला सुक्रुली इमोजी पठेई देछि मंकी देन तापर आसीगला कि तमर गार्डन लिजार्ड इंडो देन राणा टिग्रीना कि आसीला बेंगो देन आसीला व्हेल देन स्टारफिश तुम जानि तो स्टारफिश इज नॉट अ फिश मन रखियो स्टारफिश इज नॉट अ फिश
ओके तो ये जो एनिमल किंगडम को आमे 11 टा फाइला बा 11 फाइलम रे डिवाइड करछे एंड व्हाट आर द 11 फाइलम रिमेंबर पोरिफेरा निडारिया टेनोफेरा प्लैटीहेल्मिन्थेस तापरे आस्केल्मिन्थेस देन एनिलिडा देन आर्थ्रोपोडा देन मोलुस्का एकाइनोडर्माटा हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा क्लियर हमें ये जो एंटायर एनिमल किंगडम द प्लांट किंगडम का हम डिवाइड करथिले को बेसिस रे थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा ट्रेडोफाइटा एंड स्पर्मेटोफाइटा सेम एनिमल किंगडम को हम डिवाइड करछे 11 टा फाइला सेट थिला चारटा डिवीजन एडी 11 टा फाइला 11 टा फाइला की अछनी पोरिफेरा निडारिया टेनोफोरा प्लैटीहेल्मिन्थेस आस्केल्मिन्थेस एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का एकाइनोडर्माटा हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा क्लियर एकदम ऑलरेडी एनिमल किंगडम रे पढिबनी तुमको जेजे सर एंड तपन सर ऑलरेडी पढाइबनी ए पार्ट तुम ऑलरेडी जानिबनी मु खाली जस्ट खाली बेसिक इंट्रोडक्शन दबार थिला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2 नाउ ये जो क्लासिफिकेशन करा हिची ऑर्गेनिज्म मानकर on which basis they are classified. The number 1 is the levels of organization, how their body is organized, whether it is cellular, whether it is tissue level, whether it is organ level or it is organ system level हम से पार्ट देखियो. Number 2 is body symmetry. हम body symmetry केमती अछि, whether they are symmetrical or asymmetrical. If symmetry is there, then is there radial symmetry or bilateral symmetry? The symmetry basis आसीबो. Then germinal or embryonic layers, तांकर embryonic layer कोन अछि? Ectoderm, endoderm, mesoderm. Whether they are diploblast or triploblast. तांकर दीटा सिलम अछि ना, तांकर जो दीटा लेयर अछि ना, तीनटा लेयर अछि. एक्टोडर्म एंडोडर्म गोटे मझिरे आसिला मेजोडर्म बा मेजोग्लियर आसिला. सिलम सिलम अछि ना नाही, सिलम हैला बॉडी कैविटी. सिलम अछि तो सिलोमेट, सिलम नाही तो एसिलोमेट. और सिलम मिछि मिछि के अछि दल सेगला स्यूडोसिलोमेट. then metabolism the segmentation of the body notochord अछि ना notochord नाही और notochord आसिगला आबे notochord अछि तो कडाटा notochord नाही तो नॉन कॉर्ड एक्सप्रेस रिवर्स परिबा. then different organism you can see is the animal kingdom naja naja भी अछि सेटे साप भी अछि माछ भी अछि and जंगल राजा सिंह भी अछि lion भी अछि. Level of organization based on organization of cells animals are grouped into 4 level. One is a cellular level of organization, second is tissue level of organization, third is organ level of organization and last is organ system level of organization. Then के cell अछि मन रखाओ जो cell theory आस्तिला. Have you read cell theory? Gayatri, Abhinash, Sukruli, have you read cell theory? Yes, sir. What is cell theory, beta? What do you mean by cell theory? Who can tell me what is cell theory? Cell theory proposed by scientists Sladin and Swan, and it is modified by Rudolf Virchow. Yes or no? Scientists Sladin and Swan. Sladin is a German botanist, and Swan is a British zoologist. Sladin and Swan have together proposed the cell theory. And what is the cell theory? Cell theory means all living organisms are made up of cells and product of cells. So can you tell me what is the difference between made up of cells and product of cells? We can also call that all living organisms are made up of cells only. Then why we are writing made up of cells and product of cells? What is the need of writing product of cells? Yes. Do you get it? Do you get my point? My question is, Sladin and Swan had together proposed the cell theory.
and according to them, every living organism is made up of cells and product of cells. So they can only say that they are made up of cells only. Then why they have written they are made up of product of cells? What is the answer to this question? Why they call that product of cells? In one of you, ଆସିବନି ମନା କରିଦବ sir ଆସିବନି ବୋଲି. No sir, good. Okay, a question answer soon. Answer होचे ये कि जो से हम organism जो अच्छी डी टाइप रो अच्छी. One is unicellular, second is multicellular. तो जो माने unicellular organism अच्छी, they are made up of cell only. Entire body is made up of single cell. But जो multicellular organism अच्छी, they are made up of tissues, they are made up of organs, they are made up of organ system, and a tissue hela, ये organ hela, ये organ system hela. This is basically the product of cells. What is product of cell? ना जब tissue है गला. What is a tissue? A tissue is a group of similar cell having a common origin and common function. है नहीं? तो similar type of cells माने अच्छी, similar type of cell माने अच्छी. Now the common origin टी अच्छी और common function टी अच्छी. Clear? जी तो yes, good. So जो माने single cell theory that is called as unicellular organism. That's why it is called made up of cells. जो माने multiple cell कुनी theory that is called as हमारा tissue level organization बा organ level organization है बोले it is called as product of cells. Clear? ये चार प्रकार organization थिला. हमें first part of देखिबा tissue level ले केमते organization थी. So you can see cells are arranged as loose cells aggregates and the porifera ହେଇଛି. Porifera, the name रे answer होची. Pori means कौन ହେଇगला एठी? Pori means pores. The animals bearing pores are called as porifera. जो animal पाखरे कौन अछि? Pores अछि, ताको हम porifera बोली कहिबा. Then tissue level organization की आसिला, तापर tissue ହେଲା, then nidaria, ctenophores, एमाने polyp और medusa शो कर परिबे. Then आसिला का कहता organ level of organization. The tissues are arranged into organs like the higher animals. Platyhelminthes to chordates जाई के माने गले कोन organ level organization. And then आसिला का कहता ना हमर organ system level दोनों पाखरे अछि digestive system, respiratory system, circulatory system, reproductive system. से गला बिका this हमर organ system level of organization ताको हम higher planes बोली consider करूचे. Now it's time for question answer. A last bit देखे थे हमें question answer दिखा. Kingdom Animalia is being classified into two parts: level of organization basis से उधर cellular level और la tissue organ system level of classification. Then symmetry जब देखिबा, they are mostly asymmetrical. Symmetry नहीं, but the symmetry अच्छी, then it is radial symmetry or bilateral symmetry. Radial symmetry means ताको body को कोई भी axis से देखो cut करी भी radial plane देखी जिसमें समान 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 है बे. और bilateral को जी केवल center देखी ही cross करीबा, तेरे जैसे जिटा equal half रे divide होगा, सेगला bilateral symmetry. So मतलब body cavity और coelom जदी कही भी, there are three types. One is acylomate, then pseudocoelomate, then coelomate. जदी acylomate कही भी, ताको बोलते coelom नहीं, cavity नहीं. Example है ला phylum porifera. पुणे आउ कहीं पर सिलेंटरेटा पर निडारिया और टेनोफेरा. जदी आउ देखियो प्लैटिहेल्मिंथेस. so PCCP मन रखिबो PCCP. PCCP रे कोन सिगला? Porifera, Silenterata, Ctenophora, Platyhelminthes. These fours are basically called as what? These fours are acoelomates. our पाखे body रे कोनो coelom नहीं, body रे कोनो cavity नहीं, absent of cavity, absent of coelom. But in case of pseudocoelomates, example हो गेला केटे ascalminthus माने हे गेले. और जरे coelomate देखिबी then Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, Chordata. ଗୋଟେ Echinodermata ପାଖରେ ଗୋଟେ star mark ଟେ ଦିଆଯାଇଛି. Star ମାନେ ହେଲା କଣ ନା ये radial symmetry show करଥାଏ in case of adult. Bilateral case कौन थिला सेठी? Bilateral से देखौची हमर bilateral symmetry देखौची normal case हेले adult मानक case से कौन देखो radial symmetry show करिवो सेगला Echinodermata. ए पाइड तमर ऑलरेडी जूलॉजी रे तुमको तपन सर नले जेजे सर तुमको एटा कंप्लीटली पढ़ाई थिबे. मु जस्ट खाली ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देली, ब्रीफ समरी दे देली. दैट इज कॉल्ड एनिमल किंगडम एट अ ग्लैंस. That is level of organization, the symmetry, the cavity, body cavity, coelom, और last one is phylum. 11 phylum जो असला Porifera, Nidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Ascalminthus, Pasta, and Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata, and the last one is basically Chordata.
Now it's time for question answer. You have few questions on your screen. Now I want all of you to participate in this part and answer this question. The presence of notochord is a defining feature of which group? Sir, codex. Yes, the right answer is codates. So, Option B. yes, option B, chordata is the right answer. Next, let me annotate the part. Go. Option B, chordata, whose number are having notochord, that is called chordates. Then, which of the following phyla exhibits radial symmetry and diploblastic organization? Radial symmetry. Radial symmetry is question out there for the radial symmetry and diploblastic organization. It देखिए किए radial symmetry common asile cylinderata or nidaria. Yes, that is the right answer. Cylinderata, nidaria. Man देखिए diploblastic organization. That means the body is made up of two parts. One is ectoderm. Outer layer is ectoderm. Inner layer is endoderm. This is term layer. Ectoderm, endoderm layer. Platinum asclepiades, annelida, and so higher platinum. An animal with a water vascular system having two feet, having radial symmetry as an adult would belong to dash. Echinodermata. Second number B, yes, Sir, echinoderm. option B. Yes, correct answer is echinodermata. Sukrul is also saying the right answer. Option B is the correct answer, echinodermata. Who is then question number 14? Question number 14. Joint Which appendages. of the following is the characteristics of phylum Arthropoda? Arthropoda Joint appendage. jointed. Sir, option B. Option B is the correct answer. Joint appendages. The body cavity lined by mesoderm on both sides is called as dash. Both sides of Fibril. mesoderm. Question number 15. Sidus. Sir, option D. Option D କହିବା ନାଇଁ. Body cavity lined by mesoderm on both sides. Mesoderm ରହିଲା ମଝିରେ. D side ପଟେ silom କହିବା. Cavity. Silom. Our option silom ହବ ମନେ ରଖ. 15 number C, correct answer. 13B, 14B, 15 ହେଇଗଲା C. Correct answer is 15 number C. Last 5 question. Which of the following is a triploblastic, bilaterally symmetrical and acylomate animal? Triploblastic ଅଛି, bilateral symmetrical ଅଛି, acylomate ଅଛି. Coelom ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ triploblastic ଅଛି. Planaria. Planaria. Correct answer is planaria. The correct answer is planaria. The excretory organs in platyhelminthes. Flame cell. Flame cells. Correct. Flame Sir, cells. option C. Option C. Flame cells. Correct. Metameric segmentation. Metameric segmentation. Annelida. Annelida. Metamerism annelida segmentation body. Which of the following pairs is correctly matched? 19 number. The asclepiades coelomate habani. Hemichordata not Sir, connected. option A. Option A So is correct. completes. ये भी habani. Option A होची correct answer. 10 of completes ଆସିବ. Then an open circular system is found in dash. तार ना हैगला. B. Option Scorpion. Scorpion and prawn. Prawn ने scorpion से करीबो. एठी हम कहि परे कोन ताकू ना open circulatory system is found in this. Chat box रे भी किछ मते comment आसीची. 20 number answer is B correct. Then 19 ना होची A again correct. ठीक अछि answer सब. So hereby we have basically completed today's chapter. So let me remind you आज हमें कौन पढ़िली को पार्ट देखिले. फर्स्ट पार्ट जो पढ़िले बहुत सारा इंफॉर्मेशन थिला. सेकंड पार्ट रे मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन देबार थिला. बेसिक इंट्रोडक्शन में कहा कथा कहली तुमको रिगार्डिंग द एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम. सी these are two different chapters. मो काम थिला आज तुम एटार बेसिक इंट्रोडक्शन दबा. इंट्रोडक्शन पार्ट रे हम जति तुमको जणाई देली तुम जो डिटेल्स चैप्टर पढिबो ताजे सब जा पार्ट धीरे धीरे तुम जानि परिबो. एंड ऑलरेडी तुम एनिमल किंगडम पढुचो. चैट बॉक्स रे पीपीटी
chat box रे attachment देगी देखिए गोटे second. Can you attach this file over here? Just a second. Let me see if I can do it here or not. Say biotechnology standard X. Same तो है गला. देख लो पहले मन. Can you download it here? मैं अपलोड कर दीजिए. Just second. So upload हो छेबे. इटा ही पाइजो तमे 8 पाइजो. ना Subhranshu Sukrili. Okay. Yes, sir, upload ହେଇଗଲା. हाँ. Done. चलो. आउ काहु पचरिया दरकार नहीं. तुम मैंने ऑलरेडी स्लाइड पाई गलो. जहाँ जहाँ पढ़े चले सब क्वेश्चन आंसर ऑल पीपीटी तुम पाखे रहिला. Done. Clear? I hope तुम्हें क्लास completely बुझी पाइलो. And next class पे stay tuned. Next class में Monday रे रहिबो. 17 I guess. Monday आसु जो Monday रे मोर संग पढ़िबा हमें virus, virus and prion से पाठा पढ़ि परिबा. And then तापर हमें पढ़िबा animal plant kingdom रो chapter start करिबा. Clear? So thank you so much for joining. If you have any queries, any doubt, you can ask me in the chat box or directly you can unmute yourself and ask me. No, sir, no doubts. Okay. Done. Okay. So hereby we have completed this class. So now you can leave and good luck for your future studies. And we'll definitely meet again on Monday. Yes, same time, Monday. We'll meet again. Okay, beta. Thank you so much for joining.